बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेरी गुड मॉर्निंग कीअं आहियो दोस्तो ठीकु आहियो मज़े में उमेद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदव ख़ैर ख़ैरियत सां हूंदो निंड पूरी हूंदी इहा शिकायत इहा ई हूंदी आहे यार किथे निंड पूरी आहे ॿार सुम्हणु नथा ॾियनि गर्मी सुम्हणु नथी ॾिए राति जो कॾहिं जाग कॾहिं निंड कॾहिं देरि सां सुतासीं सुबुह सवेर उथणो पियो निंड पूरी हुजण जी शिकायत तक़रीबन घणनि खे आहे त असांजी निंड पूरी न आहे सो बहरहाल निंड पूरी हुजे या निंड थोरी हुजे निंड खे पूरो करे वठिबो असांजी इहा दुआ आहे सुबुह सां शिल रब पाक सभिनी खे सुकून अता करे कल्बी सुकून अंदर जो सुकून हीअ जेका उणतुण आहे जेका कॉम्पिटिशन आहे जेका अॻियां निकिरण जी जुस्तजू आहे तमन्ना आहे इहा थकाए छॾे थी इंसान खे मूं वटि हीअ हुजे मूं वटि हीअ छो न आहे हुन वटि आहे त मां कॾहिं वठंदुसि मूंखे कॾहिं मिलंदो हीअ जेको मिलण ऐं मटीरियल शयुनि जे करे माण्हू पंहिंजो पाण सां जंग करे थो न इहा ॾाढी ॾुखी पवे थी मटीरियल शयुनि खां हथु खणे सुकून खे महसूसु करे जेका शइ आहे उनखे महसूसु करे उनजो शुक्रगुज़ार थिए यकीन कयो त ज़िंदगी ॾाढी आसान थी पवे अलाह साईं जी महिरबानी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आउं बिल्कुलु ठीकु ठाकु आहियां ऐं उमेदु रखां थो तव्हां ख़ुशि हूंदा ऐं असांखे उमेदु आहे त मुल्क जा हालात बि जल्द ठीकु थींदा जो कुझु फ़ैसिला आहिनि कुझु घणियूं आहिनि के इंतज़ार आहिनि जेको बि थिए मुल्क जे लाइ बहितर थिए सभिनी जी यादि आहे ख़ुशि हुजो आबाद हुजो पंहिंजी मॉर्निंग में हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भली कार चवंदो दिलि जी गहराइनि सां प्रोग्राम जे आगाज़ में असां सां गॾु अॼु तमामु बहितरीनु डॉक्टर मौजूदु आहिनि छाकाणि त जॾहिं मुंदि मटिबी आहे तॾहिं वरी के अहिड़ियूं बीमारियूं जेके अचानक असांजे घर में कर खणंदियूं आहिनि कंहिं ॿार ते कंहिं वॾे ते कंहिं हिन ते के मूड स्विंग्स थियनि था के ॿारनि जी तबियतुनि में उन्हनि जे मिज़ाजनि में फ़र्क़ु अचनि था त पोइ असां मुंझी पवंदा आहियूं त थियुसि छा अहिड़ी का शइ खाधई बि कोन अहिड़ो कॾहिं वियो बि कोन पोइ हिनखे बुख़ारु छो आहे हिनखे ज़ुकाम छो आहे हीअ लिथार्जिक छो आहे सुस्तु छो आहे हीअ हिन जी दिलि छो नथी लॻे पढ़ण ते हीअ एतिरो तंदुरुस्तु नथो लॻे इन्हनि सभिनी शयुनि जे लाइ असां वटि जवाबु डॉक्टर साहिब जी सूरत में डॉक्टर साहिबु ॾाढा ज़बरदस्त आहिनि ॾाढो पंहिंजाइप वारे अंदाज़ में ॿुधाईंदा आहिनि सम्झाईंदा आहिनि ईअं जीअं को वॾो भाउ हुजे को वालिद हुजे को दोस्त हुजे को पाण जेतिरो हुजे पाण जहिड़ो हुजे जेको असांजे ॻाल्हियुनि खे असांजे मसइलनि खे दिलि सां सम्झंदो हुजे ऐं उनखे वरी पंहिंजी दिलि सां हल करण जी कोशिशि कंदो हुजे उहो डॉक्टर आहे असां सां गॾु अदा डॉक्टर वहीद पीरज़ादो अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग कहिड़ो हाल आहे दादा ठीकु आहियो तव्हां मां एॾी पंहिंजाइप छो मिलंदी आहे असांखे जो माना ईअं लॻंदो आहे त ॼण पाण गॾु बि पढ़िया हुजूं गॾु रहिया बि हुजूं भाउ सजा तव्हां पाण सुठा आहियो दादा इंसानु पाण सुठो आहे त सभु शयूं सुठियूं थियूं लॻनि जीअं तव्हां प्रोग्राम जे शुरूआति में चयो त मतिलबु इंसानु जुस्तजू करे कोशिशि करे पर राइट वे में सही तरीक़े सां केॾो मैसेज आहे असां हरू भरू लेग पुलिंग कंहिं ॿिए जे लाइ ग़लति सोचण में लॻा पिया आहियूं ऐं तव्हां वटि मूं हमेशह इहो ॾिठो आहे त तव्हां वटि पॉज़िटिव सोचियूं आहिनि ॿियनि जी भलाई लाइ जाखुड़ियो पिया हुजणु खपे न ऐं न सिर्फ़ु बिल्कुलु ऐं उहो एग्ज़ाम्पल आहे मां शायदि तव्हांखे अॻु में चई सघुमि त मुख़्तलिफ़ माण्हुनि सां मिलूं था पिया पर तव्हां मुनफ़रद इन करे आहियो जो तव्हां ॾुख था रखो तव्हां जंहिं सीट ते आहियो तव्हां उन खे निभाइण जी कोशिशि था कयो ऐं बहितरीनु मैसेज पहुचाइण जी कोशिशि महिरबानी इहो मुंहिंजो फ़र्ज़ु आहे जिन लाइ मां निंड मां उथां थो हिते वेहां थो ऐं जेकॾहिं माण्हुनि ताईं रसद मिले थी त पोइ असांजो फ़र्ज़ु आहे पंहिंजो त असां पंहिंजे हिसे जो कमु कयूं असांजो त कमु आहे ॻाल्हाइण पर ॻाल्हाइण खे रुख में वठी वञूं पर तव्हांजी पंहिंजाइप असां टेलीफोन कॉल्स ते ॾिसंदा आहियूं तव्हां सां माण्हू केॾो प्यारु कंदा डॉक्टर साहिबु अचूं था मुंद मटिजी पई ॿार जे मूं पंहिंजे इंट्रो में चयो त ॿार लथार्जिक थियनि था सुस्तु महसूसु कनि था या वरी उनखे अचानक बुख़ार थो निकिरे पोइ चए थो यार एतिरी घणी गरम बि मौसम कान्हे का ऐं एतिरी घणी थधि बि कान्हे का थधो गरम कीअं थींदो आहे न राति जो थधि आहे ॾींहं जो आहे ॿार गर्मी जो फ़ाइदो वठी आइस्क्रीम या कोल्ड ड्रिंक पी वरिती या काई शइ खाई वरिती बुख़ार थी पियो वरी गले जो हिन में इंफेक्शन्स तव्हांखे त ख़बर आहे हीअ कहिड़ा बुख़ार आहिनि बुख़ारनि त मूंखे मुंझाए छॾियो आहे त बुख़ारनि जी सम्झ में नथी अचे बुख़ार उड़ी जो आहे बुख़ार मलेरिया जो आहे टाइफाइड आहे को ॿियो आहे इनखे कीअं असां जस्टिफाए कयूं त बुख़ार कहिड़ो आहे महिरबानी भाउ सजाद हाणे अर्ज़ु इहो आहे त तव्हांजे हर लफ़्ज़नि में मैसेज आहे हाणे ॾिसो असांजा ॿार जेकॾहिं हफ़्ते में हिकिड़ो दफ़ो या 10 ॾींहंनि में हिकिड़ी कोल्ड ड्रिंक जी आस रखनि था त असां का बोतल पियूं हाणे उहा जेकॾहिं बोतल पीतनि त सही पर नुक़सानु गले खे थियो छो थियो ओरिजिनल शयूं कोन्हनि हर कोल्ड ड्रिंक्स जूं अलाए केतिरियूं कापियूं आहिनि हर शहर में मां त ॾिठो आहे त महलनि में हाणे इहे फैक्ट्रियूं लॻी पियूं आहिनि ऐं उते इहे ठहनि थियूं पियूं ख़ासि तौर ते शादी हालनि में या जेके दुकान आहिनि मिसाल जी बेवरेजिस जा उतो उहे शयूं निकिरी जॾहिं उते पहुचनि थियूं ॿार पियनि था त गलो ख़राबु थिए थो ॿियो वरी असांजे ॿारनि खे थधियूं शयूं घुरिजनि
आइस्क्रीम बि थधी घुरिजे, कोल्ड ड्रिंक बि ज़रूरी आहे मानी खाइण खां बाद में, या महिमान थी किथे वञूं था मानी खाराई पर जेकॾहिं कोल्ड ड्रिंक न रखियईं त माना मुकमिल खाधो न थियो, त उन्हीअ मां ॿारड़ा इन्फेक्शन वधीक था वठनि। हाणे अॻु में इहो हूंदो हो त जेकॾहिं ॿारड़ो सिर्फ़ु बुखार सां ईंदो त असांजे ज़हन में ॿ शयूं हूंदियूं हुयूं त जे 3 ॾींहंनि खां वधीक बुखार थियो अथसि त मलेरिया बि थी सघे थी, टाइफाइड बि थी सघे थी, पर हाणे इन्हनि खां वधीक अॻिते निकिरी विया आहियूं। सिर्फ़ु मलेरिया नथा सोचूं, असां डेंगी बि सोचूं था, कंडीशन ते डिपेंड थो करे, छो जो ॿार उहा हिकिड़ी तस्वीर आहे जंहिंखे असां ॾिसी ऐं जज कंदा आहियूं ऐं फ़ैसिलो कंदा आहियूं त इट कुड बी, ही शयूं बि थी सघनि थियूं, ही शयूं थी सघनि थियूं। पोइ जेकॾहिं ॾिसंदा आहियूं त इहो कंट्रोलेबल आहे त असां त वधीक लैब्स बि न कराईंदा आहियूं, त ज़रूरत कहिड़ी आहे। जेकॾहिं कंहिं ॿार जी जेकॾहिं विटामिन डी करायूं, 2000 ख़र्चु करायूं त उनखां 2000 जूं दवाऊं छो न ॾियूं, छो जो विटामिन डी जूं डिफिशियंसियूं त डॉक्टर खे सम्झ में अचनि थियूं, इहे विज़िबल हूंदियूं आहिनि, इहे असांखे लिकियल ॻाल्हियूं न आहिनि। ऐं बुखार बि हिकु अहिड़ी शइ आहे जेकॾहिं थारोली असां ॾिसूं या फोकस ऑफ इन्फेक्शन ॾिसूं त इहो किथे आहे, शुरूआति कयूं असां गले खां, नक गले खां, पोइ असां बाक़ी जिस्म ते अचूं, जेकॾहिं असां सही तरीक़े सां मुआइनो कयोसीं त बि डॉक्टर 70% त पहुचींदो आहे त ही थी सघे थी शइ। ऐं जेकर अञा उनखे प्रूव करे त का हिकिड़ी ॿ टेस्ट वधि में वधि, त जे वधीक फैमिलीअ खे बि डिस्टर्ब न कयूं, फिनांशियली बि उन्हनि जे मथां बोझ न पवे, ॿार बि सही रुख सां हले। डेंगी बि थी सघे थो, मलेरिया बि थी सघे थो, टाइफाइड बि थी सघे थो, छो जो केतिरी बि कोशिशि असां कई आहे पर असांखे पाणी साफ़ु कोन मिलियो आहे। जॾहिं पाणी साफ़ु असांखे कोन थो पियो मिले, पोइ इवन मिनरल हुजे, मिनरल में बि अलाए केतिरियूं कापियूं हुयूं, त हाणे जेकॾहिं मिनरल जेको असां वठी पियूं था उहो अलाए कहिड़ी कंपनी जो अलाए किथे आहे। इवन असां हाणे जीअं गर्मियूं अचनि थियूं त असां कोशिशि थींदी आहे असांजे ख़ासि तौर ते नंढनि शहरनि में असां या इवन वॾनि शहरनि में बि ॻाल्हि कयूं त असांखे जेका बर्फ़ मिलंदी आहे उहा पाणीअ में विझी छॾींदा आहियूं। हाणे उहा बर्फ़ ख़ुदि कहिड़े पाणी सां ठही ऐं उहा पई किथे आहे कीअं। हाणे मां पोइ साल वियुसि ॻोठु त चयो आहे यार लस्सी ते दिलि थी चए, हा लस्सी त हुन ठाही, ॾही विधईं, गुरचुक गुरचुक कयईंसि, वरी जॾहिं बर्फ़ कढी त हुन संदल जे हेठां जेका पई मक्खियुनि जे ॻुड़ जे हेठां उहा जॾहिं बर्फ़ विधईंसि ताईं जहिड़ी बर्फ़ जी कंडीशन हुई त मां चयो यार बसि तूं पी छॾ भले लस्सी पाण। असां ईअं ई चङा आहियूं। हाणे ॾिसो न इहे नंढियूं नंढियूं शयूं आहिनि, त पहिरियों ई 2 शयूं ज़हन में हुयूं न, या त टाइफाइड आहे, एंटरिक फीवर आहे, आंडे जो बुखार चऊंसि, या मलेरिया आहे। हाणे मलेरिया खां बि ॻाल्हियूं अॻिते निकिरी वियूं, डेंगी बि अची वियो, कॾहिं कॾहिं त फ्रेंजाइटिस टॉन्सिलाइटिस जे करे बि बुखार थिए थो। वरी जेकर अञा समझदार डॉक्टर आहे त उहो ज़हन में रखंदो या 2 ॻाल्हियूं पुछंदो त जेकॾहिं ॿार उन एज जे हिसाब सां अचे थो त असां UTI बि सम्झूं था, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, UTI बि थी सघे थो, या इवन करोना बि थी सघे थो पियो ॿारनि में, जेको असां हाणे लैब्स कोन था पिया तरी करायूं, त असांखे 4 शयूं त ज़हन में आहिनि ई आहिनि। अच्छा, ॿारनि में बि इहो रद्द नथो करे सघे न साईं। त मक़सदु इहो आहे त हाणे इहो डिसाइड असां था कयूं पिया हिकिड़ो स्पॉट ते त बाबा छा थी सघे थो, पर असांजे ज़हन में इहे 4 शयूं आहिनि। पोइ पहिरियां 3 ॾींहं जेकॾहिं तव्हां वटि हिस्ट्रीअ सां आयो त 3 ॾींहं जो बुखार बि आहे त घबराइण जी ॻाल्हि न आहे। असां वटि इहो एलिमेंट तमामु घटि आहे त असां उन्हनि जे पेरेंट्स खे एश्योर करायूं, उन्हनि खे सम्झायूं। असां डॉक्टरनि मां उहा मोहबत निकिरी वई आहे त जेको मरीज़ अचे थो त रुॻो सुईअ जे लाइ कोन थो अचे, पर जेकॾहिं हू सुई हणाइण बि अचे थो त असां ते फ़र्ज़ु थो थिए बीइंग अ डॉक्टर त असां हुननि खे सम्झायूं, टाइम ॾियूं 2 मिंट, तॾहिं हाणे हिनखे बुखार त आहे पर हाणे ॿिया कहिड़ा उपाउ आहिनि जो बुखार खे असां घटि करे सघूं था। जीअं ई ॿारड़ो अचे थो असां एंटीबायोटिक लिखूं, इहा बि ज़्यादती आहे। अनटिल अनलेस वी प्रूव अदरवाइज़ त प्रॉब्लम किथे आहे, थ्रोट में आहे, UTI आहे, चेस्ट में आहे, किथे आहे। त 3 ॾींहं जेकॾहिं असां हुनखे कंज़र्वेटिवली ट्रीट कयूं त बाबा ॿार खे पाणी लॻायो, मुंहुं धो, ॿाहूं धो, ॼंघूं धो, जीअं नमाज़ लाइ वज़ू था कयूं अहिड़ी तरीक़े सां त ॿारड़ो बहितर सम्झंदो। ॿार खे रोज़ानो शावर करायो, तड़ करायो त ॿारड़ो बहितर रहंदो। कपिड़ा रोज़ाना चेंज करायोसि। पैरास्टामोल, जेको पैरास्टामोल मां कंहिं जो पर्टिकुलर नालो नथो खणां, त जनरिक नेम आहे, त पैरास्टामोल राउंड अ क्लॉक ॾियोसि, को नुक़सानु न आहे, पर महिरबानी करे डोज़ सोचे सम्झी ॾियो, ईअं न थिए त इहो डोज़ एक्सीड थी वञे। पैरास्टामोल डोज़ एक्सीड थी वियो, वधीक ॾिनोसीं, माना हुनजे जहिड़े सां असां खेॾियासीं लिवर सां।
इन मां हिकु गर्मी बुखार डोज़ वधीक अची वियो ॿार खे त जहिड़ो मुतासिर थी सघे थो, यानी वरी साई बि थी सघे थी, कुझु कामड़ चवंदा आहिनि, जॉन्डिस थी सघे थी, त हमेशह वित आहार वज़न आहार हुन खे डोज़ ॾियूं ऐं हुनखे सम्झायूं त कहिड़ा ॿिया तरीक़ा आहिनि जो असां बुखार खे घटि करे सघूं था। पर जेकॾहिं अञा 3 ॾींहंनि गुज़रण जे बावजूदि बि ॿार जी सिवियरिटी वधे थी त पोइ असां कुझु चंद लेब्स कराए ऐं असां फाइनल डायग्नोस ठाहे एंटीबायोटिक बि अकॉर्डिंग टू वेट। मां वरी हिते ईंदुसि त महिरबानी करे जीअं ई ॿारु अचे थो त इअं शरबत लिखो न, रोकियो हथ खे, सम्झायो हुननि खे, पर जे शरबत लिखो था त वरी प्रॉपर डोज़ेज सम्झायो। असां वटि लेवल तमामु घटि आहे सोचण जी सम्झण जी, ख़ासि तौर ते चाहे शहरनि में, मां ॿारड़ी चो इल्ज़ाम ॾियां, असां हुननि खे डोज़ सम्झायूं कोन था त भला चमचो कहिड़ो हुजे पियारियूं ml कुझु त अहिड़ा इंजेक्शन्स में भरे ख़ाली जेका हूंदी आहे या सुई हूंदी आहे तमामु आसानु हूंदो आहे। इहो त अञा असां बहितर सम्झंदा आहियूं त जेकॾहिं पढ़ियलु कहिड़े माण्हू खे सम्झायूं त बाबा हे 7.5 ml हुन जो 1.5 चमचो चऊं, पोइ 1.5 चमचे में अलाए केतिरो छुल्की किरंदो, कुझु हुनजे कपिड़नि ते, कुझु वातड़े में वियो, पोइ हाणे जेका वई। पर सिरिंज में इहो आहे तव्हां नीडल हटाए उहो डोज़ प्रॉपर वातड़े में विझंदो, आस्तड़े आस्तड़े त उहो ॿारड़ो वेंदो बि वेंदो ऐं उहो हिकिड़ो एप्रोप्रिएट डोज़ हुनखे मिलंदो, त उहो अञा वधीक आसानु आहे। बजाए इन जे जो असां हलंदे फिरंदे ॿुजीअ में साईं अक्सर सुठियूं सुठियूं फैमिलियूं असांखे अची ॿुधाइनि थियूं अदा 2 ॿुजियूं पियारे छॾीसूंसि, अधु 2 ॿुजियूं इहो कीअं हाणे ॿुझे पियारण महिल भला केतिरो निकितो अदा पोइ हाणे जेतिरो पी अथई, इहे ई ॻाल्हियूं छॾे ॾियूं। ॿारनि मामले में का बि असां मतिलबु को कंप्रोमाइज़ न कयूं था। जेका पी अथई वरो खेॾंदो ॿारड़ो आहे, ॿियनि ॿारनि खे ॾिसी ॾिनी आहे त 101 बुखार में खेॾंदो, पर असां वॾनि खे थींदो आहे त 100 त पोइ पिया हूंदासीं, असां चवंदा आहियूं बाबा मूंखे ॻाल्हि ई नथी वणे। अच्छा डॉक्टर साहिबु अचूं था हिन ॻाल्हि ते, त असां वटि हिननि बीमारियुनि सां गॾोगॾु उरड़ी जी जेका बीमारी आहे, मीज़ल्स जेके अंग्रेज़ी में था चवनि, असां पंहिंजी ॿोलीअ में उरड़ी चऊं त माई बि चऊं, जेके मुख़्तलिफ़ नाला आहिनि, इन जी कीअं शनाख़्त थिए, जेका दाणा वाणा थियनि था चहिरे ते, सभु शयूं असां वटि ख़ासि तौर ते ॿहिराड़ियुनि में चङनि भलनि डॉक्टरनि खे ख़बर नथी पए उरड़ी आहे त इन जी दवा छा हुजणु खपे, इन जी केयर छा हुजणु खपे। हींअर तव्हां जो प्रोग्राम वालदेन बि ॾिसनि था ॿारनि समेत, पर डॉक्टर बि ॾिसनि था जेके जनरल फिज़िशियन्स आहिनि जेके प्रैक्टिस कनि था, त उन्हनि खे कहिड़ी प्रैक्टिस करणु खपे? साईं सभिनी जे लाइ मुंहिंजो हिकिड़ो पैगाम सम्झो, रिक्वेस्ट सम्झो, इहो ई आहे त जेकॾहिं ॿारु हिन वक़्त में त वबा फैलियल आहे, जी साईं, उरड़ी तमामु घणी थी चुकी आहे ऐं हर महले में, हर घर में, हर ॻोठ में आहे। जेकॾहिं प्रैक्टिस में असां ॾिसूं त असां पोइ बि 30% खां मथे या ओवर 30% असां मीज़ल्स ॾिसूं था पिया, एतिरा केसिस आहिनि। मीज़ल्स या जंहिंखे खसरो था चऊं, माई था चऊं, उरड़ी था चऊं, इन में ॿारड़ो तेज़ बुखार सां ईंदो, हाई ग्रेड फीवर मोर देन 103। हाणे 103 खां जेकॾहिं मथे बुखार आहे ऐं तव्हां इहो पैरास्टामोल यूज़ था पिया, टेम्परेचर नथो टुटे, त ॾिसो मां अर्ज़ु इहो कयो त असां डॉक्टर 2 मिंट टाइम ॾियूं, असां मरीज़ खे ॿुधूं, असां मरीज़ खे पंहिंजाइप ॼाणायूं, असां उन खां इहा हिस्ट्री वठूं त तव्हांजे पाड़े ओड़े में, तव्हांजे घर में, तव्हांजे रिश्तेदारनि में जिते तव्हां विया हुजो त उते कंहिं का उरड़ी त नहीं। जेकॾहिं उरड़ी आहे त ज़हन में तव्हां 70% रखो त इन ॿार में इहो जरासीम मुंतक़िल थी सघे हूंदो, त असां उहो ज़हन में रखूं। सभ खां पहिरियों त उरड़ी वारे ॿार खे तेज़ बुखार ईंदो, पूरा 3 खां 5 ॾींहं एतिरो बुखार हलंदो जो उहो बुखार तव्हां असां 2 शरबत विझूं था पिया बुखार लाइ बि बुखार डाउन नथो थिए। 5 ॾींहंनि खां पोइ पहिरियां ई वात में हिकिड़ा फलूकड़ा निकिरंदा आहिनि उरड़ीअ जा, जेको डॉक्टर थ्रोट ॾिसण महिल ॾिसी सघे थो, या कन जे पोयों सन्हड़ा दाणा ईंदा आहिनि। इहे त 3 ॾींहंनि खां पोइ बि शुरू थी वेंदा आहिनि, जेकॾहिं डॉक्टर तवजो सां थोरो ॿार खे हथड़ा घुमाए पोइ ॾिसी वठंदो। छो हूअं बि असां क्लिनिकली त असां ॾिसंदा आहियूं त को हिते लिफ नोड्स त न आहे, मेस्टोटाइटिस त न आहे, त असांजी आदत हूंदी आहे असां ॾिसंदा आहियूं, असां फंगल इन्फेक्शन लाइ बि थोरो कन खे खणी पोइ ॾिसंदा आहियूं त को इन्फेक्शन त न आहे, त जे उहो बि नज़र अची वञे बुखार सां त ज़हन में रखणु घुरिजे त इहा उरड़ी आहे। 4थे ॾींहं ते 3 ॾींहं तेज़ बुखार हलंदो, 4थे ॾींहं ते दाणा पहिरियों चहिरे ते ईंदा। हाणे इन मैसेज खे सही तरीक़े सां वठो त जेकॾहिं दाणा तव्हांजा सॼे बदन ते अचानक शुरू थी विया, फौरी तौर ते शुरू थी विया, इहा मीज़ल्स न आहे। मीज़ल्स जो दाणो जेको ईंदो पहिरियों चहिरे ते ईंदो,
लाखड़ो बि आहे उन सां गॾु लाखड़े में बि साॻियो अलामातूं निकिरनि थियूं त उन में बि बुखार थिए थो उन दाणे में में फ़र्क़ु आहे अच्छा दाणे में फ़र्क़ु ओके गॉट इट हाणे हिन जो दाणो तमामु सन्हड़ो बारीक ब्राउनिश पित वांगुरु चइजे जी सन्हड़ी पित जंहिंखे चऊं था ईअं हूंदो ऐं उहो पहिरीं चहिरे ते ईंदो सही अच्छा इन सां अलामतूं ॿियूं इहे हूंदियूं त बुखार दाणा पर अखियूं ॻाढ़ियूं कंजक्टाइटिस थी वेंदी आहे हिन में ऐं नकु एतिरो वहंदो जो नकु साफ़ु कंदे कंदे बि अमड़ थकिजी थी पवे त ॾाढो नकु बि वहेसि थो इहे अलामतूं आहिनि त हाणे हिनखे खसरो अचे थो पियो पर जे खसरो अचे थो त महिरबानी करे वरी हाणे कंहिं हकीम ॾे या ॿियनि शयुनि न भॼो न को पीले कपिड़नि ॾे ॻाढ़े कपिड़े ॾे त वारो की उन में बंदि कयूंसि इन ज़हन खे बि साफ़ु असां कयूं त बहितर आहे छो जो जेतिरो असां उनखे कवर कंदासीं बुखार जे अंदरि ओतिरो ॿार खे असां नुक़सानु था ॾियूं त असां ॿार खे नुक़सान खां बचायूं कॉम्प्लिकेशन खां बचायूं छो जो हीअ त वायरस आहे हिन जी का ट्रीटमेंट कान्हे का या सेल्फ लिमिटेड आहे पाण ई ठीकु थी सघे थी पई सिर्फ़ु असां उनखे कॉम्प्लिकेशन खां बचायूं जॾहिं 5 ॾींहं ते मुंहं ते दाणा आया त 6 ॾींहं ते ऑटोमेटिकली इहे हेठि लहंदा जॾहिं ट्रंक ते यानी सीने ते आया पोइ पेट ते ईंदा पोइ पूरी बॉडीअ ते 7 ॾींहंनि में थी था वञनि जॾहिं लोअर लिम ते यानी ॼंघुनि ते बि दाणा अची विया त इहो हिकिड़ो नेचुरल प्रोसेस आहे त इहो मथां वारा दाणा हाणे सुकणु शुरू थींदा ऐं टेम्परेचर में कुझु घटिताई मिलंदी टेम्परेचर में तमामु आसान मां सम्झाइण जी कोशिशि कई त इहा माई इहा खसरे जी वबा ऑटोमेटिकली ख़ुदि ई ठीकु थींदी पर सिर्फ़ु बचायो हाणे इन में असांजा जेको मिसकॉन्सेप्ट्स आहिनि त उहा ॿार जो मुंहुं न धोरायो ॿार खे को ॾिसे न ॿाहिरियों अचे न ॾिसे ॿार खे कमरनि में बंदि कयूं साईं सजाद साहिबु बि न ॾिसे साईं तव्हां मथां सुञाणो सजाद साहिबु लाइव बि न ॾिसे ॿारड़ो साईं उहो ॿारड़ो बंदि कयूं ऐं कपिड़ो ख़ासि तौर ते जेको असां ॾिठो आहे प्रैक्टिस में ॻाढ़ो या पीलो पर एॾो बंदि करे ईंदा जो ॿारड़ो साहु न खणी सघंदो आहे पोइ कॉम्प्लिकेशन जे करे असांखे प्रॉब्लम्स अचनि था जो असां दाख़िल बि कयूं था इवन डेथ थियनि था ॿारड़ा कॉम्प्लिकेशन जीअं हाणे मां ॿुधायो त अखियुनि जो सफ़ाई न थी मुंहुं न धोतोसीं कंजक्टिवाइटिस थी वियसि ओरल वात खे असां सही तरीक़े सां साफ़ु न कयोसीं उन में फंगल इन्फेक्शन लॻी वेंदा जेके चवंदा त वात पची पियो आहे ओरल थर्श थी था वञनि पिया अचूं सीने ते हुनखे दवाऊं न ॾिनियूंसीं हुनखे बंदि कयो वियो त उहो अंदरि ई अंदरि जरासीम रहियो त हाणे उहो जरासीम सीने ते असरु रखियो नमूनिया डेवलप थी वई हाई ग्रेड फीवर थी वियो साह में तकलीफ़ थी वई त ज़ाहिर आहे जंहिं सुठे सेटअप में ईंदा त उनखे ट्रीट त कबो पर इते असांखे पेरेंट्स रोकींदा आहिनि घणा त साईं हिनखे का इलाज जी ज़रूरत न आहे हिनखे सुई न हणिजो हिनखे ड्रिप न हणिजो बाबा 4 ॾींहंनि खां ॿार कुझु खाधो न आहे ॿार डिहाइड्रेशन में हलियो वियो आहे हाइड्रेशन रखंदासीं ॿार खे तर रखंदासीं त ॿार बहितरु हूंदो सुजाॻ हूंदो छो जो वात में फलूकड़ा आहिनि उहो कुझु खाए पीए नथो बुखार तेज़ आहे बुखार खे कंट्रोल कंदासीं वात खे सिंपल तरीक़े सां ट्रीट कंदासीं कुझु जिस्म में फ्लूइड नमकियात शामिलु कंदासीं त उहो ॿार बहितरु रहंदो जेकॾहिं सीने में को इन्फेक्शन आहे त एंटीबायोटिक ॾियो न त एंटीबायोटिक जी बि ज़रूरत कान्हे का रेस्पायरेटरी रेट ॾिसंदा आहियूं त साह खणण जो अमल जेकॾहिं ॿारड़े में लेवल आहिनि 0 खां 1 1 साल ताईं आहे 1 खां 2 सालनि ताईं आहे वरी 5 सालनि ताईं आहे त जेकॾहिं उहे ज़हन में असांखे पॉइंट्स हूंदियूं त हरू भरू एंटीबायोटिक जी ज़रूरत न आहे उहो पंहिंजो पाण ई अलाह से उनखे शिफ़ा ॾींदो आहे ऐं उहो बहितरु थींदा ईंदा आहिनि पर कॉम्प्लिकेशन आहे त मस्ट बी ट्रीटेड पर इन सां गॾो गॾु इहो इहा लाखड़ो चइजे लाखड़े जी त मूंखे थोरी घणी आहे त उहो विचड़ंदड़ आहे न जी कंटीजियस आहे हीअ बि आहे कंटीजियस आहे बिल्कुलु सही हीअ त इन खां वधीक आहे अच्छा जॾहिं कंहिं ॿार खे उॾी थिए असां वटि वरी रिवाज़ आहिनि त असां वरी पंहिंजा बचिड़ा वठी करे हुन खां पुछण त भई फलाणे जो ॿारु बीमार आहे हलो त हुन खां घरां हली पुछी अचूं त पोइ वरी पंहिंजा नंढा ॿार वठी वेंदासीं या उहे ॿार ईंदा या ॿिया बि त हाणे उन ॿार खां पुछूं न पुछूं पोइ पंहिंजे कचहरियुनि में ॻाल्हियुनि में शुरू थी वेंदा त पोइ हीउ जेको हॉस्पिटल्स में त झलींदा आहिनि त नंढनि ॿारनि खे न वठी वञूं पर जिथे अगरि नाचाकी आहे त उते बि त एहतियात उहो ई कबो न डॉक्टर साहिबु कोशिशि हुजे त ॿारनि खे न वठी वञो हा पहिरीं ॻाल्हि त घर में कंहिंखे बुखार आहे त हिकिड़ो त मेज़बान पर असां चवंदासीं चवंदा बाबा अलाए छो थो झले या ॿार हा त वाह छो भला तूं हा एक्चुअली इहो जेको वायरस आहे इहो ट्रांसफर थो थिए साह खणण जे अमल सां ओके जीअं कोरोना आहे असां सम्झी वियासीं त जेका बाप आहे ऐं ख़ासि तौर ते राति जे वक़्त में ज़्यादा असरु थो थिए छो त जेकॾहिं 5 सालनि खां घटि उमिरि वारा ॿार आहिनि त असां चवंदा आहियूं त इहे गॾिजी सुम्हनि न ठीकु आहे
जीअं कोरोना में त थोरो डिस्टेंस पिया रखूं, सही। छो जो इहो ई बाफ़ मां, इहो साह खणण जे अमल मां इहो ई वायरस होॾे मुंतक़िल थिए थो। त बहितर आहे त असां जेकॾहिं पंहिंजे घरड़े में ई जेकॾहिं 5 सालनि खां घटि उमिरि वारा ॿार आहिनि त उन्हनि खे अलॻि कंहिं कमरे में सुम्हारियूं त बहितर थींदो। कमिरो न आहे विरहांडे में सुम्हारियूं, पर उन कमरे में जंहिंमें बचिड़ो आहे उन में उनखे न सुम्हारियूं त बहितर आहे। ऐं जेकॾहिं मिज़ाज पुलिस लाइ वञूं था पिया, सुनत तरीक़ो आहे, तव्हां उन नियत सां वञो त मां त चवां थो तव्हां घर खां निकितव उन नियत सां बि तव्हां जूं नेकियूं लेखी थी वञनि। ऐं उन घर जे भातियुनि सां वञी मिलो, बचिड़ा नंढा न वठी वञो, छो जो हिकिड़ो कलाक लाइ वञो, 2 कलाकनि लाइ वञो, उते वेही कचहरी करे तव्हां मोटी अचो, छो जो ॿारनि जी इम्यूनिटीअ में असांजी इम्यूनिटीअ में वॾो फ़र्क़ु आहे। त बचड़नि खे साफ़ु रखूं, बहितर इन में इहो आहे त दवाउनि खां बचायूं, हथ मुंहुं बार बार धोऊं, पैरास्टामोल राउंड क्लॉक ॾियूं, अखियूं साफ़ु कयूं, वात में सिंपल ग्लिसरीन लॻाईंदा रहूं त ॿार खे अंदरि का इन्फेक्शन न थियनि त बहितर थी वेंदो असांजो ॿार उन खां। ऐं 5 खां 7 ॾींहंनि में ॿार ई बहितर थी था वञनि। बाक़ी जेके दाणा आहिनि इन करे बि परेशान हूंदा आहिनि त मां कॉन्फिडेंस सां थो चवां त इहे दाणा हटी वेंदा। इन लाइ बि को लोशन लॻाइण जी ज़रूरत कान्हे, को केमिकल के सोप यूज़ करण लाइ, क्रीम यूज़ करण लाइ असां पैसा छो वक़्त सां गॾोगॾु सही थींदा। अच्छा, उन सां गॾोगॾु डॉक्टर साहिबु अगरि कंहिं ॿार खे ख़ुदा ख़ासिता का उड़ी आहे, लाखड़ो आहे या कंहिं हवाले सां बुखार, वायरल बुखार आहे, सभु शइ, ऐं उनजी वैक्सीनेशन ड्यू थिए थी उन ॾींहंनि में या का कंपेन्स हलंदियूं आहिनि या छा वाट एवर, छा उहा वैक्सीनेशन कराए सघिबी उन्हनि बुखार जे दौरान? पोलियो जा ड्रॉप्स त पीआरिबा आहिनि पर वैक्सीनेशन कराए बि, या पोलियो जा ड्रॉप्स न आहिनि पीआरिबा? ख़बर न आहे। सॉरी लफ़्ज़ वापसि। इहे छो जो हे इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ थी थो वञे ॿारड़ो, त इन में न पोलियो जो क़तरो ॾियो ऐं न इनखे वैक्सीन फ़िलहालु करायो। अच्छा, ठीकु आहे। कुझु किताबनि में त आहे त तव्हां 3 खां 4 हफ़्ता छॾे ॾियो। अच्छा, उन खां पोइ जेकॾहिं वैक्सीन कराईंदव त इहो हिकिड़ो ॼण त बूस्टर हुनखे थी वेंदो। ठीकु आहे। छो जो हूअं इहो वैक्सीनेटेड थी थो वञे, जॾहिं इहो वायरस अचे थो त ॿारड़ो पाण ई वैक्सीनेटेड थी थो पियो वञे, पर जेकॾहिं असां कराईंदासीं त अञा बि बूस्टर आहे। पर कोशिशि इहा कयूं त असां 9 महीननि खां पहिरियां ई जेकॾहिं इहे टुका पूरा कंदा अचो अकॉर्डिंग टू एज, जेकॾहिं 9 महीननि ते बि असांजो टीको लॻो ॿारड़े खे खसरे जो, जीअं हाणे ॿियो 12 महीननि ते था आणूं, त 9 महीननि ते जेकॾहिं लॻल आहे ऐं जेकॾहिं हुनखे खसरो थियो त मां यकीन सां चवां थो हुनखे खसरो थियो, ठीकु आहे, वायरस अफेक्ट कयो, पर वायरस एतिरो नुक़सानु न ॾींदो जीअं ॿियनि खे ॾींदो, छो जो वैक्सीनेटेड ॿार आहे। सही। बाक़ी पंहिंजा अलामातूं ज़ाहिर कंदो, हल्कियूं फुल्कियूं थींदियूं, उहो असरु रहंदो, पर उहो नुक़सानु न ॾींदो जेको अनवैक्सीनेटेड ॿारड़े खे आहे। असां अलाए छो अञा वैक्सीन खां ॾिसो केॾो फ़र्क़ु अची वियो। हिकिड़ो ॿारड़ो खसरे में वठिजी वञे, ॿारड़ो पोलियो जी बीमारी में वठी वञे, पर जेकॾहिं इहे असां पोलियो जा क़तरा पिया ॾियूं या असां वैक्सीन करायूं त असांजा ॿार केतिरा महफ़ूज़ रहंदा। बिल्कुलु ईअं। ऐं असां अञा इन्हनि ॻाल्हियुनि खां परे आहियूं। सही। मीडिया हेतिरो ॿुधायो आहे, पेपर्स अख़बारुनि में अचे थो पियो, हाणे त लाउड स्पीकरनि ते ऐलान कया था वञनि पिया, वॾनि वॾनि मॉल्स में वञो किथे त उते बि ऐलान कयो थो वञे त ॿारनि खे टुका लॻारायो, पर असां इन शयुनि खां पोइ ते आहियूं। ॿियनि शयुनि जे लाइ टाइम कढूं था, पर महीने में हिकिड़ो दफ़ो, वंस अ मंथ, मंथली असांजा इहे आहिनि, एक्सेप्ट जेके नेशनल डेज़ आहिनि जो असां पोलियो जा एक्स्ट्रा डोज़ ॾियूं था पिया, न त उहो त मंथली तव्हां पियारियो, को मसइलो ई न आहे। हाणे महीने में हिकिड़ो ॾींहुं पंहिंजे बचे खे, छो जो हर इलाइक़े में हिकिड़ो मिंट सां वधीक बि न आहिनि, हिकिड़ो मिंट थो लॻे, उन इन हिकिड़े मिंट जी केॾी क़ीमत पोइ चुकाइणी थी, अगरि नथा अदा कयूं हुन टाइम ते त पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे। ऐं मुफ़्त में साईं, ऐं फ्री में, मुफ़्त में फ्री, तव्हांजे दरवाज़े ते अचे तव्हांखे पियारे वञनि, तव्हांजे दरवाज़े ते अचे टीका ॾेई वञनि। असांजो इख़लाक़ हुजे न त असां उन्हनि खे आदरभाव कयूं, पर मां ॾिठो आहे काफ़ी त कंहिं कंहिं जॻह ते हुननि सां अहिड़ो रवैयो रखियो वेंदो आहे जो ॾुख थींदो आहे। हूअं बि जेको महिमान अचे। सही। अच्छा, ॿियो हिकिड़ो ज़रूरी सुवालु असांजे काफ़ी घरनि बातनि जे ज़हन में हूंदो त हिकिड़ो पीउ आहे या माउ आहे, स्पेशली मां वालदा खे वधीक उन ते ॾींदुसि त दवा पीआरण में अॻियां वालदा हूंदी आहे न, माउ हूंदी आहे, टाइम ते दवा लिखंदी बि, पढ़नि मतिलबु जेको हुनजो ड्यूटी आहे, ड्यूटी मतिलबु जेको हुनजी सेल्फ। एंटीबायोटिक डॉक्टर चए थो बाबा हिनखे 5 ॾींहंनि खां 7 ॾींहंनि ते एंटीबायोटिक पीआरियो, ॿारड़ो 2 ॾींहंनि खां पोइ ठीकु थी थो वञे त माउ खां विसरी थो वञे त मूंखे एंटीबायोटिक पीआरणी आहे। इहो जेको 3 खां 5 ॾींहंनि ताईं या 5 खां 7 ॾींहंनि वारो जेको डॉक्टर फ्रेम सेट कंदो आहे त एतिरा ॾींहं पीआरिजे एंटीबायोटिक, त छा इहो लाज़मी पीआरिजे या जेको रहिजी थो वञे त उहो वधीक हानिकार आहे? इहो आख़िरी तव्हांजा लफ़्ज़ त वधीक हानिकार आहे, छो जो इहो रेज़िस्टेंट पैदा थींदो। अच्छा। हाणे 3 ॾींहंनि में इन जरासीम खे इहा एंटीबायोटिक या
कहिड़ो बि शरबत हूंदो त उहो हुनखे ईअं आसान सिंधी में चऊं त निबल कंदो, सुस्तु कंदो, ख़तमु कोन कंदो। अच्छा, इहो वरी रीजनरेट थी सघे थो, वरी उहो थी सघे थो ठीकु आहे, कंहिं अरसे खां पोइ। सही, हाणे जेकॾहिं कल्चर प्रूव ॻाल्हि कयूं, हा, थ्रोट कल्चर आहे, पेशाब जो कल्चर आहे, बुखार लाइ ब्लड कल्चर कयोसीं, या मुख़्तलिफ़ ॿिए आहिनि जेके प्रॉब्लम, या कनु थो पियो वहे, सही, असां कन खे त कुझु सम्झो ई कोन था, वरी ईअं साफ़ु करे छॾियोसीं, सही, पर कन जो वहणु तमामु ख़तरनाक आहे, ओके, जंहिं ॾे असांजो तवजो ई कोन्हे, त उन जो कल्चर थो थिए। जेकॾहिं कल्चर प्रूव का बि शइ आहे त 14 ॾींहंनि ते एंटीबायोटिक ॾियणु ज़रूरी आहे। 14 ॾींहं, 14 ॾींहं इन में कॾहिं बि कोताही न कजे। पर कल्चर नेगेटिव आहे, पर हुन में सिम्टम्स हुया। हाणे डिपेंड थो करे त कहिड़ी लेबॉरेटरी रिपोर्ट कई आहे। सही, कल्चर नेगेटिव आहे, पर ॿार में सिम्टम्स माना उहे अलामतूं आहिनि त इट शुड बी ट्रीटेड फॉर 10 days मैक्सिमम, पोइ बि ॾियो। अच्छा, ऐं जेकॾहिं न ॿार बहितर आहे ऐं एंटीबायोटिक सां स्टार्ट कई आहे, हा, या त न कयो, जीअं मूं चयो तव्हां थोरो वेट बि कयूं, पर किथे किथे डिसीजन वठिणो थो पवे। सही, सूरत हाल खे ॾिसी करे जी, जी, त पोइ घटि में घटि 5 खां 7 ॾींहं ताईं दवा प्रॉपर डोसेज में ऐं उहा टाइम ते ॾियणी आहे। असां वटि नेग्लिजेंसी ॾाढी आहे। सही, तव्हां 100% सही था चओ। असां कमकार में, कुकिंग में, रिश्तेदारनि में, बाज़ारि वियासीं, उहो टाइम निकिरी वियो, टाइम खे स्केप न कयो, ॿारनि सां न खेॾियो, पंहिंजे सिहत सां न खेॾियो, इहे डोज़ पूरा कयो। पर शर्त इहो आहे त डोज़ प्रॉपर हुजे, सही, डोज़ एक्सीड न हुजे जो ॿार खे दस्त थी पवनि, सही, डोज़ एतिरो वधीक न हुजे जो अञा का ॿी कॉम्प्लिकेशन थी पए, कंहिं ॿिए ऑर्गन ते असरु न रखनि एंटीबायोटिक्स सही आहे। पर डॉक्टर साहब हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी बि त ॾिठी वई आहे त कंहिं मुख़्तलिफ़ डॉक्टरनि वटि सभिनी जा 50-50, हिकिड़े डॉक्टर चयो त फलाणी एंटीबायोटिक जो ही डोज़ आहे, ॿिए डॉक्टर ॾे विया, उन चयो आहे फलाणी इहा एंटीबायोटिक तव्हांखे थोरी पीआरिणी, तव्हांखे त हीअ एंटीबायोटिक पीआरिणी, हेतिरो डोज़ रखिणो, पोइ जॾहिं मिक्स एंड मैच थी वञे त उहो ॿार खे नुक़सानु आहे। घणो साईं, असांखे पंहिंजे इलाइक़े में ख़बर हुअणु घुरिजे। हा, त असांजे इलाइक़े में किथे बि रहूं था, कराची में आहियूं, हैदराबाद आहियूं, लाड़काणे आहियूं, कहिड़ो डॉक्टर बहितरीनु आहे जेको 2 मिंट बि ॾिए थो ऐं सम्झाए बि अथो, इहो आहे डॉक्टर। बाक़ी जेकॾहिं 200 जी लाइन लॻी पई आहे, हणणु आहे, त पोइ इहो आहे डॉक्टरी न चए। सही, हाणे जेकॾहिं असांखे ख़बर हुजे त हीअ असांजो फैमिली डॉक्टर आहे या असांजो सुठो डॉक्टर आहे जेको असांजे बचनि खे ॾिसे थो पियो, उहो जेकॾहिं ड्रग का बि स्टार्ट करे थो त प्लीज़ उन खे कंटिन्यू कयो। सही, भले इन जाइ ते डॉक्टर वेही तव्हांखे चयो, तव्हां उन सां आर्ग्यू कयो, तव्हां उन सां ॻाल्हायो त साईं डॉक्टर साहिबु ॾिसो हे कयो आहे। हाणे वरी ॿियो अना परस्ती असां डॉक्टर छॾिया, जे मां चाहींदो आहियां जेके छापर ॾे में दवाऊं खणी ईंदा आहिनि, पोइ ढकण मेरा बि हूंदा आहिनि, त हुनखे सम्झाईंदो आहियां त हिननि खे थोरो साफ़ु करे रखो। कोशिशि कंदो आहियां त को बि शरबत 70 रुपए खां घटि कोन्हे, एंटीबायोटिक न हो, ॿियो नॉर्मल जेको नॉर्मल। हाणे पैरास्टामोल 300-500 खां घटि आहिनि ई कोन। साईं ॾिसो, हाणे जेकॾहिं को बि 70 रुपए खां घटि न आहे त हिकिड़ो आम जेको 500 खां 1000 रुपया कमाए थो पियो, असां ख़बर बि आहे त इहो पैरास्टामोल आहे, सुठी कंपनी आहे, असां भाई हे बाबा छा कमु न कंदो, बाबा हे ॿियो वठि, उहो 90 ते मिलंदुसि, त हू 70 रुपया त ज़ाया थियो न। छो जो ढकणी खुलण खां पोइ त हुनजो असरु उहे बि 7 ॾींहंनि में या 10 ॾींहंनि में ख़तमु थी थो वञे। त असां महिरबानी करे बचड़नि ते तवजो ॾियो। मां डॉक्टर साहिबान खे अर्ज़ु थो कयां, जीअं तव्हां चयो साईं मूंखे शाम जो वरी पोइ घणियूं ॻाल्हियूं ईंदियूं आहिनि, त साईं महिरबानी कयो, जेकॾहिं ॾिसो था पिया त हुन हाणे शुरू कयो आहे त उन खे डोज़ तव्हां पंहिंजो कैलकुलेट करे हुनखे ॿुधायो। डोज़ खां बग़ैर ॿारनि में दवा न ॾियो, वॾो बर्दाश्त कंदो ॿारु न कंदो, पर उहे डोज़ पूरा ॾींहंनि ताईं पूरा कयूं त बहितरु आहे। पर इहे असां ॻाल्हियूं या हरकतूं छॾे ॾियूं ऐं असां हमदर्द थियूं। साईं अलाह साईं वॾी शिफ़ा थो ॾिए ऐं अलाह साईं एॾी बरकत हुजे। हे मां लफ़्ज़ डॉक्टर लाइ थो ॻाल्हायां, असां करे ॾिसूं, असां धंधा ॿिया बि कयूं था पिया, पर जेकॾहिं इहो अलाह सां कयूं त कंहिंजो बचिड़ो आयो ऐं हुनखे दवा जेकॾहिं कंहिं लिखी बि ॾिनी आहे, हा तव्हां इहो ॾिसो था त यार वाक़ई हुन थोरो ज़्यादती कई आहे, इहो असांजो ज़मीर फ़ैसिलो करे, पोइ हुनखे सम्झंदा त साईं हे थोरो हिन लाइ बहितरु न आहे। छो जो कुझु अहिड़ियूं एंटीबायोटिक्स आहिनि जेके सिर्फ़ु अपर एयर में यानी हिन गजले खां मथे कमु थी पवनि, कुझु अहिड़ियूं एंटीबायोटिक्स आहिनि जिन मां असां 2 फ़ाइदा वठूं त अपर एंड लोअर ॿई वठूं, कुझु अहिड़ियूं दवाऊं आहिनि जिन में सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु असां UTI यानी पेशाब जा मर्ज़ उन्हनि जो फ़ाइदा वठंदा आहियूं। अच्छा डॉक्टर साहिबु, अक्सर जेके वालदाऊं ॾिसनि थियूं, असांखे माहिरूं ॾिसनि थियूं, उनखे जेके 2-2, 4-4 ॿार आहिनि त उहे एक्सपीरियंस्ड माहिरूं सॾिबियूं आहिनि त मुंहिंजे फलाणे पुट खे जॾहिं हीउ बुख़ारु थियो, फलाणी धीउ खे हीउ थियो त मां हिनखे हीअ दवा ॾिनी त सही थी वियो सभु शइ।
पोइ पाड़े जे बि कंहिं ॿार खे कुझु थिए थो या फ़ोन ते त पोइ उहे अधु डॉक्टरियाणियूं थी वञनि पाण खे, पोइ चवनि थियूं हिक ॿिए खे सलाह ॾिजनि त फलाणी दवा पीआरीस फलाणी, जंहिंजे ख़िलाफ़ु मतिलबु मां हूंदो आहियां भई हर कंहिं ॿार जी पंहिंजी पंहिंजी नेचर आहे, वज़न आहे, उमिरि आहे, ऐं माहौल आहे, सभु शयूं। त इन्हनि खे कीअं डील कजे ॿाहिरिनि खे? सही जेका अधी उन एक्सपर्ट अधीअ खां वठे थी दवा उनखे सोचणु घुरिजे। त तुंहिंजे नंढो 5 साल पाण खे बि सोचणु खपे त पंहिंजे ॿारनि खे हाणे छा दवा हाणे छा ॾिजे, ऐं हुनखे कहिड़ो हिन वक़्त में जरासीम लॻल आहे, बुखार कहिड़े क़िस्म जो आहे, जे हाणे मलेरिया जी ग़लति दवा ॾियण जे करे ॾिसो तव्हांजा रत जा जुज़ा घटिजी था पिया वञनि। सही ओवर डोज़ जे करे छो जो चवंदो दीदी अधी मच्छर चक पातो, मां वियुमि डॉक्टर हे ॾिनो, मां पीतमि हिकु टिप थी वियो। इन हिकु टिप में तव्हां सॼे पाड़े वारनि जा बचड़नि खे सां न खेॾो त बहितरु आहे। हुननि खे मशवरो ॾियो, अधी कंहिं चङे डॉक्टर सां राब्ते में अचो, बचड़े खे बुखार घणो आहे, बजाए इन जे जो आहे क़ौमी दवा ठाहियां जो हर एक खे वते उहा छीछड़ी ॾेखारींदी, वते उहो वतन प्यारींदा, सही को फ़ाइदो कोन थो थिए। भक्ति तौर ते जेकॾहिं 2 ॾींहं बि थियो त मां तव्हांखे कॉन्फिडेंस सां चवां थो त इहो ॿारड़ो अञा अॻिते अञा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस में अची वेंदो। पर महिरबानी डॉक्टर साहिबु, तव्हां पंहिंजो क़ीमती वक़्तु सुबुह साण ॾिनो असांखे, ऐं मूंखे अॼु जेका महिमान पर्सनैलिटी आहे असां वटि उहा घण रुखी आहे। ज़िंदगी में असां अक्सर चवंदा आहियूं त की अहिड़ा माण्हू बि हूंदा आहिनि जेके ज़िंदगी में सॼी ज़िंदगी में हिकिड़ो कमु कंदा आहिनि, की अहिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि जेके पंहिंजी हिकिड़ी ज़िंदगी में सभई कम करण जी कोशिशि कंदा आहिनि। मुख़्तलिफ़ शख़्सियतूं ठहंदियूं आहिनि, तॾहिं चवंदा आहिनि त हूअं बि 2 शयुनि जो शॉर्टकट न हूंदो आहे, हिकिड़ो एज, ॿियो एक्सपीरियंस। इन्हनि ॿिन्ही जा शॉर्टकट्स न हूंदा आहिनि। एज सां गॾोगॾु जॾहिं एक्सपीरियंस थिए थो ऐं मुख़्तलिफ़ ज़ावियुनि सां थिए थो त यकीनन माण्हू जी शख़्सियत उभिरे थी। एक्सपोजर उन में पोइ मीडिया जो हुजे, पढ़ियल लिखियल माण्हुनि जो हुजे, उन में माण्हुनि सां मिलण जो हुजे, उन में कुझु पंहिंजो अहिड़ो कमु कयल हुजे या ट्रेनिंग्स हुजनि या मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में मुख़्तलिफ़ सेमिनार्स में मुख़्तलिफ़ इशूज़ ते जॾहिं माण्हू ॻाल्हाए थो, पढ़े थो, मुतालियो करे थो, ॿुधे थो, त यकीनन उनजी शख़्सियत ठहे थी। सो अॼु असांजी जेका महिमान शख़्सियत आहे उन तालुक़ बि ईअं आहे, लिखण पढ़ण सां हिकिड़े लिटरेट घराणे सां तालुक़ आहे, ऐं उन सां गॾोगॾु पाण लिखनि पियूं, ज़ावियो कनि पियूं, ॾिसनि पियूं, एक्सपोजर अथनि, ऐं पाण TV एंकर बि रहियूं आहिनि, ऐं उन्हनि खे ख़बर आहे त हाउ टू डील कीअं कजे सिचुएशन सां, माण्हुनि सां, सभिनी सां। त अॼु असांजी मुअज़्ज़िज़ महिमान जेका राइटर बि आहे, जेका होस्ट बि आहे, जेका शाइरा बि आहे, जेका घण रुखी शख़्सियत जी मालिक आहे, किंदील जाफ़री साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। कैसी हैं आप? ठीक हैं, वेलकम। थैंक यू। ज़िंदगी बहार है, ज़िंदगी पहाड़ है, ज़िंदगी है क्या? आपसे पहला, क्योंकि आपका जो इंट्रो मैंने देखा और आपके बारे में, तो मैंने जहन में ये था कि आपसे कुछ ज़िंदगी के बारे में जाना जाए। जी, ज़िंदगी मुख्तलिफ इन चीज़ों के जो आपने जिनका जिक्र किया, इनके इम्तिजाज का नाम है, लेकिन वो जैसा कि बुद्धा ने कहा था कि ज़िंदगी दुखों का घर है, तो दुख ज़्यादा हैं, खुशियाँ कम हैं, लेकिन आप की अगर सोच पॉजिटिव है तो आप काफ़ी हद तक अपने दुखों में से भी खुशियाँ कशीद कर लेते हो। क्योंकि कोई भी दुनिया में इंसान ऐसा नहीं है जिसे मुसलसल दुखों में से गुजरना पड़े या मुसलसल खुशी में से गुजरना पड़े, तो ज़्यादा कम का रेशो चलता रहता है। लेकिन किंदील साहबा, इस तरह से तो है, हम अपने दोस्तों से पहचाने जाते हैं ना, जो जहाँ हम उठते बैठते हैं, बहुत सी चीज़ों से पहचाने जाते हैं, हम अपने नज़रियात से पहचाने जाते हैं, हम अपने अमल से पहचाने जाते हैं, हम ज़िंदगी में आने वाली आजमाइशों से पहचाने जाते हैं, और दोस्तों से भी पहचाने जाते हैं। शख्सियतें कैसी बनती हैं? शख्सियत आप खुद साख्ता होती हैं या लोगों के रवैये और तजुर्बात सिखाते हैं, शख्सियत बनाते हैं? नहीं, शख्सियत तो इंसान की पैदा होने के बाद से बनने का अमल शुरू हो जाता है, और माहिर नफ्सियात के बकौल 10 साल तक एक बच्चे की शख्सियत बन जाती है, 70% बन जाती है, बेसिक। बाद में वो ग्रूम होती है, इंसान इल्म से सीखता है, तजर्बात से सीखता है, अपने माहौल से सीखता है, सीखने का अमल तो ज़िंदगी भर जारी रहता है। लेकिन शख्सियत में जो बुनियादी चीज़ें हैं वो कुछ तो जेनेटिक्स में से आती हैं, और कुछ आपकी बचपन की तरबियत से आपको मिलती हैं, और शख्सियत बन जाती है इब्तदा में। लेकिन एक बात इसमें और भी है कि जो ट्विन्स होते हैं उनकी भी तबीयत एक दूसरे से नहीं मिलती, उसी घर में रहते हैं, उसी उस्ताद से पढ़ते हैं, उसी माहौल में पले बड़े होते हैं, लेकिन तबीयतें और मिजाज इंटायरली डिफरेंट होते हैं। वो अगर नहीं, अगर तो वो एक ही जीन्स से आए हैं, और अगर उनका देखें, एक होता है जहन, सोच तो डिफरेंट हो सकती है ना, उन दोनों के दिमाग तो अलग अलग है ना,
تو سوچنے کی صلاحیت تو قدرت نے ہر انسان کو دی ہے کہ وہ کس طرح سوچتا ہے, کس انداز میں سوچتا ہے. لیکن اگر ماحول تھوڑا سا بھی تبدیل کر دیا جائے دونوں کا تو خاصا فرق آ جاتا ہے. آپ کی شخصیت کب چینج ہوئی, یا اسی پیٹرن پہ آپ نے بچپن سے اپنے والد سے, لٹریٹ گھرانے سے اور پڑھنے پڑھانے سے بیسک چیزیں تو میرے اندر وہی ہیں. مثلا میرے جو فادر ہیں وہ وقت کے بہت پابند ہیں, اور میرے اندر بھی یہ وقت کی پابندی ضرورت سے زیادہ ہے. ایک تو یہ میری جینز میں ہے. کچھ چیزیں انہوں نے بچپن میں ہمیں بتانی شروع کر دی تھیں. جب ہم نے ہوش سنبھالا, جب بچہ 3-4 سال کا ہوتا ہے, تو انہوں نے ہمیں مورل ویلیوز کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ دیکھو بیٹا, زندگی میں یہ پیسہ دولت یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی. زندگی میں کردار, اخلاق, علم یہ چیز بڑی ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو, اپنے کردار کو بڑا بنانا. اب جب آپ بچے کو یہ بار بار آپ کہتے رہیں گے تو پھر ظاہر ہے اس کی شخصیت میں وہ چیزیں بالکل آ جائیں گی. اور پھر بچپن سے ہمیں وہ کہانیاں سنایا کرتے تھے سونے سے پہلے. جب تک ہم کہانی نہیں سن لیتے تھے ہمیں نیند نہیں آتی تھی. تو اس کے بعد وہ گھر میں بچوں کی کہانیاں, تو وہ پڑھنے کا شوق ہوا. تو پھر اس سے پھر ایسا ماحول ملا گھر میں کہ وہ پھر لکھنے کا سلسلہ بھی خود شروع ہو گیا. پہلے تو ہم کہانیاں سن کے سوتے تھے, اب موبائل دیکھ کے سوتے ہیں. نہیں, سوشل میڈیا کی ایڈکشن جو ہے وہ واقعی بہت زیادہ ہو گئی ہے سوسائٹی میں. میں خود کبھی کبھی اس کا شکار ہو جاتی ہوں, اور جو وقت مجھے لکھنے کو دینا چاہیے وہ میں سوشل میڈیا پر, اگرچہ میں وہاں وقت ضائع نہیں کر رہی ہوتی. میرا ایک پوئٹری کا چینل ہے, قندیل پوئٹری پلینٹ کے نام سے, جہاں پر تمام کلاسک شعراء کی پوئٹری میں پڑھتی ہوں. کیونکہ میں وائس اوور آرٹسٹ بھی ہوں تو وہ نیریشن میری ہوتی ہے. تو اپنی شاعری تو کم ہی لگاتی ہوں, لیکن جدید اور کلاسک شعراء کی شاعری وہاں میں پڑھتی ہوں. تو وہ اس کی پوسٹ بنا رہی ہوتی ہوں یا تو اس میں بھی گزر جاتا ہے. تو بعض اوقات وہ وقت جو میں اپنی, جیسے میری کتاب فکشن کی آ رہی ہے اور اسے آ جانا چاہیے تھا, اس میں تاخیر اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ میں وہ وقت جو ہے وہ بھی سوشل میڈیا کو دے دیتی ہوں. تو وہ بھی وقت کی ضرورت بھی ہے نا. دنیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ جا رہی ہے, دنیا اب جا رہی ہے, لیکن کوئی بھی چیز 5th جنریشن کی بات ہو رہی ہے. کسی بھی چیز کا جو ہے نا وہ بیلنسڈ ہونا چاہیے. ضرور سے زیادہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ بھی آپ کو ذہنی طور پر آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. انسان جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے, اسے ڈپریشن میں جاتا ہے. اچھا, خواتین کے لیے آپ کا کیا زاویہ ہے کہ ابھی آج کل جیسے 8 مارچ کو میں نے آپ کا کچھ فیس بک پیج فالو کیا اور دیکھا, اس میں آپ کی زبردست شاعری بھی تھی عورتوں کے حوالے سے, تمام کانفیڈنس کے حوالے سے. لیکن ہم صرف باتیں کرتے ہیں, کیا اصولی آزادی بھی ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو ہے کہ یہ معاشرہ میل ڈومینیٹڈ ہے, بلکہ پوری دنیا ہی میل ڈومینیٹڈ ہے. اچھا. تو جو بھی ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے نا, اس کے پاس طاقت ہوتی ہے. اور طاقت, میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں جب لوگ کہتے ہیں مرد عورت کا استحصال کر رہا ہے, تو میں کہتی ہوں نہیں, طاقت استحصال کرتی ہے. وہ طاقت اگر عورت کے پاس آ جائے گی تو وہ مرد کا استحصال کرے گی. صحیح. تو استحصال طاقت کا رہی ہوتی ہے. اور چونکہ خواتین جو ہیں ان کے پاس پاور نہیں رہی اس طرح سے, تو وہ مرد ڈومینیٹ کرتا رہا. پھر ہمارے ہاں جو لڑکا ہوتا ہے اس کی تربیت اور طرح سے کی جاتی ہے, لڑکی کی اور طرح سے. تو وہ بچپن سے ہی سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں جو ہوں برتر ہوں, تو وہ اس کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے. اور وہ پھر ایکسپیکٹ کرتا ہے اپنی بہن سے, اپنی بیوی سے کہ یہ میرا حکم مانے, میں ڈیسیژن کروں اور یہ جو ہے اس کو مانے. تو وہ چیز ہمارے اندر چونکہ دماغوں میں آ چکی ہے. میں تو سمجھتی ہوں پڑھا لکھا شوہر اور ان پڑھ شوہر ایک ہی جیسے ہوتے ہیں اور بیوی کے معاملے میں. بلکہ میں نے ایک جگہ ایک بات کی تھی, کوئی ایک مسئلہ تھا, تو ایک کورٹ کا کوئی کیس تھا, تو وہاں میں نے, اب میں وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی, تو میں نے جج سے یہ بات کہی. میں نے کہا ہمارا جو مشرقی مرد ہے, دوست بہت اچھا ہوتا ہے, شوہر بہت برا ہوتا ہے. ہاں, یہ بات بالکل آپ کی درست ہے, بالکل درست ہے. اچھا, آپ رائٹر بھی ہیں, شاعرہ بھی ہیں, کس زاویے سے لکھتی ہیں؟ میں لکھتی ہوں شاعری اور نثر دونوں لکھتی ہوں. اس کے پیچھے میرا کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو ایجوکیٹ کروں. کوئی مقصد ہونا چاہیے آپ کی تحریر میں. آپ کی تحریریں بے مقصد نہیں ہونی چاہیے. جیسے لوگ سطحی رومانٹسزم پر لکھتے ہیں, شاعری بھی کہانیاں بھی, تو مجھے وہ اچھا نہیں لگتا. اور نہ ہی میں افسانہ نگاری میں بھی میں وہ نہیں ہوں کہ میں کہانی پر بیس نہیں کرتی. اس میں بھی ہیومن فلسفی ہوتی ہے, لوگوں کی بیہیویئرز ہوتے ہیں,
जिन्हें मैं लेके चल रही होती हूँ। और शायरी में भी मेरा कोई ना कोई मकसद होता है। जैसे अब मेरा एक शेर है कि दूसरों से बेवफाई के गिले शिकवे बजा, लेकिन अपनी ज़ात से भी कब वफा करते हैं लोग। क्या बात, फिर एक और मेरा शेर है कि क्या बात है। एक गज़ल का है कि ए शाखे समरवर न झुको और ज़्यादा, ए शाखे समरवर न झुको और ज़्यादा, हद चाहिए इजहार मुरव्वत के लिए भी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो इस तरह से मेरी शायरी में आपको शायद मेरी किताब आज के दौर में मकबूल ना हो, लेकिन मेरे बाद ज़रूर होगी, क्योंकि जिस शायरी में कोई ना कोई मकसद या मैसेज हो वो आने वाले ज़मानों के लिए ज़िंदा रहती है तहरीर। रेजिस्टेंस है आप में? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। ये तो बंदा जो है अपने आप को आजमाता रहता है खुद। क्योंकि देखिए, जब आप जैसे लोग जो राइटर होते हैं, जो स्क्रीन पे आते हैं, उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स भी होते हैं। आपके किए हुए अमल को लोग फॉलो करते हैं, आपने जैसे किया उस जैसा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्योंकि जब आप जैसे लोग जब पर्सनैलिटीज़ बन जाती हैं, जब उनका किसी सोसाइटी में एक नाम होता है, तो आपके पीछे आप जिनको जानते भी नहीं होंगे, लेकिन आपको वो फॉलो कर रहे होते हैं, आपकी तबीयतों को। तो हमें बहुत मोहतात रहना पड़ता है, इसलिए कि हम माशरे में एक टीचर का रोल अदा कर रहे होते हैं, अगर समझा जाए तो, जो कि नहीं होता। बिल्कुल। हमारे यहाँ लोग, अब पता नहीं जो हमारे यहाँ हीरोज़ हैं या जो हमारे यहाँ बहुत शोहरत हासिल कर लेते हैं लोग, आप उनको क्या कहेंगे, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमारी इवन हीरोइन और हीरो जो होते हैं उनको भी बहुत मोहतात रहकर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, बड़ी डिग्निफाइड वे में, कि लोग उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं, उन्हें आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपकी ज़ुबान से निकला हुआ कोई लफ्ज़ भी जो है वो आपको मुश्किल, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा इस बात की केयर करती हूँ कि मेरा चूँकि सोशल मीडिया पर मेरा पेज भी है जिस पर लाखों फॉलोअर्स हैं, और मेरी जो फेसबुक है उस पर भी ज़ाहिर जितने हो सकते हैं उतने हैं। तो मुझे जब इनबॉक्स में लोग मैसेज भी करते हैं, तो मैं जिस तरह से उनसे बात करती हूँ, मैं बाज़-औक़ात उन्हें समझा रही होती हूँ। अगर वो मुझसे कोई गैर मुहतात बात भी कर दें तो मैं उन्हें समझाती हूँ बड़े अच्छे तरीके से कि देखें ये ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए इंसान को। और आप मतलब कोशिश करती हैं, और वो काफ़ी लोग उसको मान भी लेते हैं और समझ भी जाते हैं और मेरी इज़्ज़त करते हैं इस बुनियाद पर। क्योंकि मैं आपको बताऊं, इज़्ज़त बनाना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए आपको एक तो बहुत मोहतात ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, और दूसरा ये है कि बहुत सी अपने मफादात की कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। बहुत सारी जगहों माशरे में आपको साबित करना पड़ता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो गलत नहीं सोचते, ना गलत बात करते हैं। तो कदील साहब, आपने खुद किसको फॉलो किया? फॉलो देखिए, हम किसी से सीखता है, किसी से इंसान कोई इंस्पिरेशन तो होती है। बाज़-औक़ात किसी आम इंसान से भी कोई अच्छी बात मिलती है तो मैं उसे सीखती हूँ, और मैं कहती हूँ कि नहीं, ऐसा होना चाहिए, इसमें कितनी अच्छी ये बात है। लेकिन आपके आइडियल्स होते हैं माशरे में। मैंने आइडियलाइज़ करती हूँ मुख्तलिफ़ शख्सियतों को, बड़ी बड़ी शख्सियतों को करती हूँ, और कई शख्सियतें हैं, लेकिन जिस तरह अब्दुल सत्तार ईदी हैं, जब मैं बचपन से सोशल वर्क करना चाहती थी और वो ख्वाहिश मेरे अंदर, अब भी मैं अपनी इंडिविजुअल हैसियत में जो भी होता है मैं करती हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश हमेशा से रही है कि मैं एक NGO बनाऊँ, और मुझे एक अच्छी टीम, बदकिस्मती से अभी तक ऐसे लोग नहीं मिले जो मुझे कहें कि हाँ हाँ भाई हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, करो ये शुरू काम। तो वो लोग अभी नहीं मिल सके मुझे, और अकेली मुझे शायद मुश्किल ये लग रहा है, या फिर शायद मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ इस हवाले से कि मैं कर सकूँ, लेकिन मैं सोशल वर्क करना चाहती थी। तो मैं जब अब्दुल सत्तार ईदी के को देखा करती थी, उनके काम, तो मेरे दिल में ख्वाहिश आती थी कि काश मैं थोड़ी सी ऐसी बन सकूँ जिस तरह की ये हैं। तो जिन लोगों ने बड़े बड़े काम किए और जो लोग वाकई, तो वो उनको मैं रश्क की नज़र से देखती हूँ। आजकल एक ट्रेंड है ना मोटिवेशनल स्पीकर्स का। जी, अक्सर हम देखते हैं, आजकल हम सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक पे चले जाएँ, यूट्यूब पे चले जाएँ, इंस्टा पे जाएँ, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आजकल एक हैमरिंग भी हो रही है इसमें। बाज़ औक़ात वो भी कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, कि इतना ज़्यादा, तो हर जगह से मोटिवेशन आ रही है, लेकिन वो मोटिवेशन हमें बड़ी आर्टिफिशियल सी लग रही होती है जहाँ से आ रही होती है। क्या रियल मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं हमारे पास? बिल्कुल है।
بلکہ مجھے تو اکثر موٹیویشنل سپیکرز جو یوٹیوب پر مجھے تو ایک دوسرے کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سچی بتاؤں میں ایک بات کاپی کر رہے ہوتے ہیں, کاپی تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن بات صحیح کر رہے ہوتے ہیں, غلط بات نہیں کر رہے ہوتے. اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ہی مل رہا ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں, باتیں وہی ہوتی ہیں, کرنے کا ڈھنگ مختلف ہوتا ہے. تو موٹیویشنل سپیکرز جو ہیں ان کا آج کے دور میں ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت. لیکن آپ جیسے کہ وائس اوور آرٹسٹ بھی ہیں, آپ اینکر بھی رہی ہیں, آپ سارا کچھ ہیں, تو انداز بیاں بہت کچھ سکھا دیتا ہے نا انسان کو. انداز بیاں بھی ہونا چاہیے اور کنٹینٹ بھی آپ کا مضبوط ہونا چاہیے. لیکن وہی کانٹینٹ اگر کوئی جس کے پاس انداز بیاں نہیں ہوتا, وہ بات ایسے ہوا ہو جاتی ہے. لیکن وہی بات اگر کوئی ظاہر ہے بہت سی چیزیں مل کر ایک چیز کو خوبصورت بناتی ہیں نا. جس طرح ہم انسان کی پرسنالٹی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی انسان کی شکل و صورت تو بہت خوبصورت ہے, لیکن اس کی آواز اچھی نہیں ہے یا اس کو وہ باتیں اچھی نہیں کر رہا, تو وہ خوبصورتی ادھوری رہ جاتی ہے. بلکہ خوبصورتی بعض اوقات لگتی ہی نہیں ہے, بہت اس کا عارضی امپیکٹ ہوتا ہے. تو پرسنالٹی از اے کمپلیٹ پیکج. تمام چیزیں مل کر کسی بھی پرسنالٹی کو بناتی ہیں, اور اسی طرح کوئی بات بھی دل میں تب اترتی ہے اگر اس میں بہت سی چیزیں شامل ہوں. آپ کا انداز بیاں, وہ بات آپ بات کیا کر رہے ہیں وہ کیسی ہے, اور آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے, فیس ایکسپریشن کیا ہے, بہت سی چیزیں مل کر بناتی ہیں. آپ لکی ہیں, آپ کو اسکرین کا بھی رہا ایکسپیرینس, اور پھر مزاج آپ کو والدین سے بھی ملا اور ان سے بھی آپ نے سیکھا آپ کا اپنا مزاج. تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں جو قندیل کو اوپر لے آئیں. بعض جو ہماری بہنیں ہیں, اسپیشلی میں بہنوں کی بات کر رہا ہوں یا فیمیل رائٹرز کی بات کر رہا ہوں, ان کو یہ چیزیں نہیں مل رہی. یا تو وہ اچھی شاعرہ ہوتی ہیں یا میڈیا پہ تھوڑا بہت کیا ہوتا ہے. اگر ہم اسکرپٹ سے ہٹ کے بات کریں تو سچی بات ہے کہ ہم خود حیران رہ جاتے ہیں کہ ایکسپوجر یا مطالعہ ان کا اتنا وسیع نہیں ہوتا, ان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے. لیکن یہ پیکیج کس طرح سے, یہ کم لوگوں کے پاس پیکیج ہے, میں نے تو یہ زندگی میں دیکھا ہے. دیکھیں کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں کہ جو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں آپ کے اندر, آپ کو اپنے والدین سے ورثے میں بھی ملتی ہیں. کچھ ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت کو آپ کے گھر والے ایکسپلور کر رہے ہیں یا آپ خود کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو. بعض اوقات آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ میں یہ چیز تھی, دوسرے بتا رہے ہوتے ہیں. آپ خود بڑے اچھے ہوتے ہیں, گھر والے ماننے کو تیار نہیں ہوتے. ہاں وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو خود بھی ایکسپلور کرنا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قدرت نے آپ میں کیا اہلیت رکھی ہے. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں مزید پالش کر سکتے ہو, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی چیز نئے سرے سے بن جاؤ اچانک. کہ میں ایک بندہ ہے وہ اسے بہت پسند ہے میوزک, اور لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی اور وہ آواز بھی نہیں دی, وہ کہہ نہیں جی میں تو گلوکار بنوں گا, تو وہ نہیں بن سکے گا. گروم تو آپ پالش تو کر سکتے ہو لیکن بن نہیں سکتے. آرٹسٹ تو گاڈ گفٹڈ ہی ہوتا ہے, بعد میں وہ گروم ہوتا رہتا ہے, پالش ہوتا رہتا ہے. تو باقی یہ میں جتنے بھی کام کر رہی ہوں بیسیکلی تو یہ فنون لطیفہ کی مختلف شاخیں ہیں تو یہ ایک ہی چیز نا, تو اتنی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ نہیں ہے. دل صاحبہ آپ جو ہیں وہی بننا چاہ رہی تھی؟ میں بننا چاہ رہی تھی کیا, میرے جو والدین تھے وہ تو مجھے ڈاکٹر بنانا چاہ رہے تھے, اور میں نے سائنس ہی پڑھ رہی تھی. لیکن جو آپ بننا لیکن اس وقت تک مجھے اتنا شعور نہیں تھا کہ مجھے سائنس پڑھنی ہے یا نہیں. لیکن جب میں نے ایف ایس سی کیا تو تب تک مجھے شعور آ چکا تھا کہ نہیں مجھے یہ نہیں پڑھنا. تو تب میں نے پھر تھوڑا سا بغاوت کی اور کہا اپنے فادر سے کہ میں یہ سائنس نہیں پڑھنا چاہتی. تو پھر میں نے لٹریچر کے ساتھ گریجویشن کی, پھر ماسٹرز بھی لٹریچر میں. لیکن اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ نہیں بھئی یہ لٹریچر بھی ایک تھا, لیکن میرا اصل سبجیکٹ تو فلاسفی تھا اور سائیکالوجی تھا. یہ مجھے جا کر پتہ چلا جب میں نے ماسٹرز کر لیا, یہ مجھے دیر سے پتہ چلا. تو سائیکالوجی میں کچھ سائیکو تھراپی یا اس طرح کی یہ میں اپنے طور پہ تو میں اگر کہیں چلی جاؤں تو لوگ, ایسا بھی ایک دفعہ ہوا کہ میں کسی اپنے جاننے والے کے ساتھ گئی ایک کلینک پر, ہاسپٹل ہی تھا وہ, تو وہاں ایک خاتون کی بچی تھی, وہ لے کر آئی تھی ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے. تو کچھ دیر کے بعد اس کی بچی نے مجھ سے باتیں کی, تو مجھے کہنے لگی آر یو اے ڈاکٹر. تو اسی کلینک کے وہ ہمارے جاننے والوں کا تھا. انہوں نے کہا ہاں یہ ہماری نئی سائیکالوجسٹ ہیں. تو وہ کہنے لگی کہ میری بچی آپ سے بات کر کے بہتر فیل کر رہی ہے, تو یہ ہے وہ ہے. تو اس کے بعد اس نے میرا نمبر لے لیا, اور وہ
ये बात पे कन्विंस्ड हो गई कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, और वो मुझे फ़ोन पर उनकी बच्ची और वो 1 साल तक मेरे साथ रहीं कि आप अपना क्लिनिक बता दें, कहाँ है हमारी बच्ची, आपसे ही ठीक हो रही है, आपकी बातों से ठीक हो रही है। तो काउंसलिंग वगैरह तो मैं कर लेती हूँ ना, तो लेकिन वो एक डिग्री है वो नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरा मुताला है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, और इंसानी नफ्सियात को मैंने सीखा है, ऑब्ज़र्व किया है, और ह्यूमन फ़िलासफ़ी को भी, ह्यूमन बिहेवियर्स को भी। अब मेरी ख्वाहिश होती है कि अगर मुझे और जन्म मिले तो मैं इसे बाकायदा पढ़ूँगी, एकेडमिकली पढ़ूँगी। खैर मेरे जो जाने वाले फ़िलासफ़र्स हैं उनकी किताबें भी मैंने पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि इल्म जो है वो कोई डिग्री का नाम तो नहीं है ना, वो तो आप किताब। जो फ़िलासफ़ी वाले लोग होते हैं वो अपनी दुनिया खुद ही बना लेते हैं, उनको उसमें लॉजिक्स होते हैं ना। हाँ। हर चीज़ को विदाउट लॉजिक फ़िलासफ़ी है ही नहीं। है ही नहीं। सही, बिल्कुल सही। वो तो हर चीज़ को महसूस कर रहे होते हैं, वो तो आपके लहजे को, आपके लफ्ज़ों को, आपके रवैयों को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपके एक्सप्रेशंस को, जेस्चर्स को तक वो पढ़ लेते हैं। मेरे अफसाने ऐसे हैं कि वो किरदार जिनसे मैं ज़िंदगी में नहीं मिली, मैंने उनके ऊपर वो लिख दिए, चूँकि मुझे साइकोलॉजी का पता था तो मैंने उन पर पूरा अफसाना लिख दिया, जबकि मैं उस किरदार से वो अफसाना लिखने के बाद मिली। तो लेकिन वो अफसाना अगर कोई पढ़ेगा तो उसे ऐसे ही लगेगा कि ये इस आदमी को अच्छी तरह जानती है। क्या बात है, क्या बात है। असांजी कचहरी जा रही किंदिल जाफ़री साहिबा सां, राइटर हन, पोइट हन, उन सां गॾो गॾु मीडिया जो एक्सपोजर अथनि, मुख़्तलिफ़ जीअं असां इंट्रो में ज़िक्र कयोसीं त मुख़्तलिफ़ मिज़ाजनि एक्सपोजरनि जो जॾहिं ठहे थो को मयार त उन मां शख़्सियतूं ठहनि थियूं। ज़बरदस्त, जेके सुञाणनि था, जेके नथा सुञाणनि उन्हनि खे बि सुञाणण जी कोशिशि उन्हनि खे बि करणु खपे। बड़ी ज़बरदस्त बात आपसे हुई ब्रेक में। दोस्ती को कहाँ देखती हैं आप? दुनिया में मेरे नज़दीक तो सबसे बड़ा रिश्ता अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो वो दोस्ती का है। बाकी दुनिया के हर रिश्ता जो है गिव एंड टेक पर चल रहा है। हाँ, वो सिर्फ वाकिफ़कार है, दोस्त नहीं। वाकिफ़कार भी, इवन जो बड़े बड़े रिश्ते हैं। हाँ। आपके लिए शायद ये बहुत हैरान कुन बात हो कि औलाद और वालदेन का रिश्ता भी गिव एंड टेक पर है, मियाँ बीवी का रिश्ता भी गिव एंड टेक पर है, भाई और बहनों का रिश्ता भी गिव एंड टेक पर है। बेलॉस रिश्ता सिर्फ दोस्ती का है, जिसमें कोई आपकी शराइत तय नहीं की जाती कि आप मुझे ये दोगे तो मैं ये दूंगा। सही, क्या बात है। तो क्या ज़रूरी है कि हम क्योंकि हम बहुत सारा वक्त कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं दोस्तों के नाम पे, तमाम चीज़ों से, लेकिन दुनिया में मजबूत लोग वो हैं जो अच्छे, कम दोस्त रखते हैं लेकिन अच्छे दोस्त रखते हैं। एक लोग वो हैं जिसका हर कोई दोस्त होता है, वो किसी का दोस्त नहीं होता। मेरा एक तो है दोस्ती, एक है वक्फियत। जी जी, बहुत डिफरेंस है इसमें दोनों लफ्ज़ों में। पहली तो बात ये है कि हज़रत अली ने फरमाया था कि वो शख्स बहुत खुशकिस्मत है जिसका एक दोस्त भी जिसे मिल जाए, बेलौस और मुखलिस। और अगर 2 मिल जाएं तो फिर वो और भी ज़्यादा खुशकिस्मत है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि मेरे 3 दोस्त हैं तो वो झूठ बोल रहा है। मतलब उन्होंने ये कहा कि 2 से ज़्यादा मुखलिस दोस्त नहीं मिल सकते। सही। तो अगर दुनिया में आपको ज़िंदगी में 2 भी मुखलिस दोस्त मिल जाए ना, तो आप समझें आप बहुत खुशकिस्मत हैं। वो कहते हैं हम सफ़र चाहिए हजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफ़िला है मुझे। तो अच्छा और मुखलिस दोस्त जो है वो आपको बस चंद ही मिलेंगे, और ज़्यादा जो लोग होंगे वो किसी ना किसी मफाद की वजह से आपसे जुड़े होते हैं। और बाज़ औक़ात आप ये समझ लेते हो कि वो शायद आपके दोस्त हैं, लेकिन जब आजमाइश का वक्त आता है तो आपको पता चलता है कि ओहो मैं तो गलत समझा रहा, ये तो किसी गर्ज से मुझसे वाबस्ता था। फिर आप बहुत तकलीफ़ में चले जाते हो, और मुझे ऐसी तकलीफ़ में से कई बार गुजरना पड़ा। और वो चूँकि मैं खुद बहुत सिंसियर हूँ, बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, जैसी अंदर से हूँ वैसी बाहर से हूँ, तो मुझे फिर बहुत तकलीफ़ होती थी। तो उसका फिर मैंने ये हाल निकाला कि मैंने लोगों से मिलना काफ़ी हद तक कम कर दिया, और ना मैं लोगों के करीब जाती हूँ। अगर मैं अपने काम के हवाले से या मैं कोई शो लाइव शो कंडक्ट कर रही हूँ या तो मुझे लोगों से मिलना पड़ता है, या मुझे एज ए मोटिवेशनल स्पीकर कहीं बुलाया जाता है, बहुत से लोग मुझसे मिलते हैं और ख्वाहिश भी रखते हैं मुझसे ताल्लुक़ बनाने की, तो मैं ताल्लुक़ नहीं बनाती। और मैं अच्छे तरीके से तो मिलती हूँ अखलाक के साथ, लेकिन मैं उनसे दूर ही रहती हूँ। एक डिस्टेंस है जो मैंने एक बहुत अरसे से अपने और लोगों के दरमियान रखा हुआ है। क्या बात है। एक कॉल है हमारे पास आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मां सनम थी ॻाल्हायां कराची खां। जी जी सनम, कीअं आहियो तव्हां? बिल्कुलु ठीकु ठाक। मां तव्हांजे महिमान सां ॻाल्हाइणु चाहींदमि। जी जी।
मिस किंदीर जाफरी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मेरा इत्तेफाक से पहली दफ़ा मैं आपको टीवी पे देख रही हूँ। आपने जितना भी काम बताया उससे मैं बिल्कुल नावाकिफ थी, लेकिन बिलीव यू मी, आपने मुझे एक जगह पे रोक दिया ना, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरी ही अक्कासी कर रहा हो। किस बात पे? जो आपने अपनी नेचर बताई मुझे, अच्छा अच्छा। तो मतलब मुझे ऐसा फील हुआ था। ये कहना चाहूंगी मैं आपकी कि आपके अंदर अल्लाह मियां ने सबको पोटेंशियल दी हुई है, लेकिन वो कुछ नसीब लोग होते हैं जो इसको डिस्कवर भी कर लेते हैं इस लाइफ में, और फिर उसको प्रैक्टिकली अपने और दूसरे के लिए फायदेमंद भी साबित करते हैं। जी तो मिस किंदीर में बहुत इंस्पायर्ड हुई हूँ आपकी बातों से, और आप जो ये काम, क्योंकि हर इंसान को पता होता है उसकी डेस्टिनी क्या है, जी। और इसी जिंदगी में अगर पता चल जाए कि आपको क्या बनना है, जैसे आपने पहले कहा कि फैमिली कुछ और बनाना चाहती है, बन हम कुछ और जाते हैं, फिर इन दी एंड हमें पता चलता है कि व्हाट इज अवर लाइफ पर्पस। तो उसके लिए मुझे सजेस्ट करें कि अगर किसी को वाकई जिंदगी के भले 40 या 50 साल के बाद भी एहसास हो जाए कि जिंदगी का मकसद क्या है, तो उसे कैसे अचीव किया देखिए, जाए? एक आपने एक बड़ा ही एक जुमला है बहुत कॉमन कि इट्स नेवर टू लेट। यस, जब तक आप जिंदा हैं हाँ। आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर वो काम करने की डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, जी, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए। तो यकीन कीजिए आप किसी भी उम्र में कोई भी काम जो आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और एक और सवाल, बीइंग अ पाकिस्तानी वुमन, जी आपको पता है कि इन सारी चीज़ों को अचीव करने में जो जो रुकावटें कभी पहले पेरेंट्स खड़ी करते हैं, फिर माशरा, फिर फैमिली मेंबर्स दूसरे, तो इसको आपने कॉप अप कैसे किया? आपको अपनी शख्सियत को बहुत मजबूत बनाना पड़ता है। अगर आपकी शख्सियत मजबूत है तो आप इन तमाम मरहलों से गुजर जाते हो। कहीं कहीं बगावत भी करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप सही रास्ते पर जा रहे हो तो एंड ऑफ द डे आपके घर वाले भी आपको तस्लीम करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। मुझे शुरू में मीडिया में आने की परमिशन नहीं दी थी। मेरे फादर ने कहा कि बेटा ये माशरा बहुत ख़राब है, तो देखो कोई इज़्ज़त पे हर्फ ना आ जाए। तो मैंने जब उनसे वादा किया कि अब्बू इज़्ज़त पर हर्फ नहीं आने दूंगी, चाहे मुझे काम छोड़ना पड़ जाए, तो आज वो फ़ख्र से कहते हैं बल्कि मुझे एक दफ़ा मेरे फादर ने कहा कि मुझे एक शख्स मिला तो उसने कहा आप कंदील के फादर हैं, तो वो तो ऐसी हैं, उनको देखकर उनकी इज़्ज़त करने को दिल चाहता है। तो मेरे फादर आज मुझ पर प्राउड फील करते हैं। कल तक वो डरे हुए थे माशरे से कि मीडिया में ये ना हो जाए, कोई स्कैंडल ना बन जाए, लेकिन मैंने बहुत जगह पर काम की अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ी हैं क्योंकि वहाँ मुझे अपनी डिग्निटी को कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा था। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगी। मैं वरना आज बहुत बड़े बड़े चैनल्स पे काम कर रही होती, लेकिन हमारे माशरे में मीडिया में औरत को एक शो पीस तो बनाया गया है, उसे इज़्ज़त नहीं दी गई। और आप जो भी बात कर रहे थे कि ठीक है औरतों का भी कसूर है, उन्हें कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन ख़वातीन अपनी ख्वाहिशों के आगे कर लेती हैं ना कंप्रोमाइज़ कि नहीं हमें बनना है, हमें बड़ी हीरोइन बनना है, हमें बड़ी एंकर बनना है, क्या है अगर ये कर लेंगे तो। मैं ऐसा नहीं मैंने किया, क्योंकि मैंने इब्तदा में ही तय कर लिया था अपने आप से। एक मैंने सवाल किया था, इज़्ज़त दौलत शोहरत इसमें से मुझे क्या चाहिए? तो मेरे दिल ने कहा इज़्ज़त सबसे पहले चाहिए, उसके बाद नेक नामी चाहिए, और दौलत तो पता नहीं किसी खाते में आज भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि ज़िंदगी इतनी मुख्तसर है कि नापायदार चीज़ है। इसमें अगर आपको यकीन कीजिए कि ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात मिल रही हैं ना, तो उसके अलावा दौलत का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल सही, वो बेकार है, सही कह रहे हैं, बेकार है आपके लिए। तो इसलिए दौलत को कभी भी ज़िंदगी का मकसद नहीं बनाना चाहिए। ज़िंदगी का मकसद बनाना चाहिए आपको इंसानियत की खिदमत को। अगर आपने बनाना दौलत हो, आपके पास वक्त ना हो, तो वो दौलत किसी काम की नहीं है। नहीं, उसको भी छोड़ दें, वैसे भी उसके बावजूद भी ये कह रहा था कि लेकिन जो अंदर का जो एक्सपोजर है इंसान का, वो बहुत मायने रखता है। उसको खुद अगर अल्लाह ताला जीने में मजा आ जाता है। अगर अल्लाह ताला दौलत दे भी दे, फ़र्ज़ करें, हाँ, देखिए अगर अल्लाह ताला जायज़ तरीके से दौलत दे देता है तो उसको आप दूसरों की भलाई के लिए खर्च करें, ना कि अपने एसेट्स बना के अपने अगली नस्लों के लिए। वो तो नस्लें आपको दूसरे दिन भूल जाती हैं, मरने के बाद कौन याद रखता है। बिल्कुल सही। तो वो अगर दौलत अल्लाह मियाँ दे दे जायज़ तरीके से, तो फिर उसको दूसरों के लिए खर्च करें। अगर आपको ये यकीन है कि आपने मरना है, अगर आपको खुदा के होने का यकीन है, देखिए ना, एक मस्जिद थी तो वहाँ लिखा हुआ था कि खुदा देख रहा है, लेकिन वहाँ से लोग जूतियाँ चोरी करके ले जाते थे। फिर एक दिन उन्होंने लगा दिया कि कैमरे की आंख आपको देख रही है, तो वहाँ से कोई चोरी नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि लोगों को खुदा के होने का यकीन नहीं है,
لوگوں کو لوگ نام تو لیتے ہیں خدا کا, نماز بھی پڑھتے ہیں, لیکن انہیں خدا کے ہونے کا یقین نہیں ہے, کیونکہ جس دن لوگوں کے خدا کے ہونے کا یقین ہو گیا نا تو وہ کوئی غلط کام نہیں کریں گے. صحیح. تھینک یو ویری مچ صنم, آپ ہمارے ساتھ رہیں. اچھا, میڈیا پہ آپ کا اچھا خاصا دور رہا جی, اس دور کو آپ کے گولڈن ایرا کہیں گی اپنی زندگی کا, یا کچھ سکھانے والا ایک ادارہ کہیں گی, یا اس میں سے آپ نے کیا پایا میڈیا سے؟ کیونکہ میڈیا میں میری خواہش تھی. میں جب 6 سال کی تھی تو میں نے اپنے فادر سے کہا تھا کہ ہم واک کرتے ہوئے جاتے تھے, مطلب ہمارا تھوڑا تعلق, میں ملتان میں پیدا ہوئی تھی تو ریڈیو پاکستان ملتان سے گزرتے تھے, تو میں ان سے کہتی تھی ابو میں یہاں آ کر بولنا چاہتی ہوں, اور میں بہت کم عمری میں ڈیبیٹر بھی بن گئی تھی. تو وہ صلاحیتیں تو تھیں نا, کہیں نہ کہیں تھا کہ مجھے میڈیا میں جانا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے جو آپ کی خواہش ہوتی ہے وہ آپ کا پروفیشن بھی بن جائے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے. تو میں نے ریگریٹ نہیں کیا کہ میں میڈیا میں کیوں آئی ہوں. میرے فادر نے مجھے آج سے کچھ سال پہلے کہا کہ تم نے اپنے لیے غلط شعبے کا انتخاب کیا, تمہارا مزاج تو ایسا نہیں ہے, تم تو کمپرومائز نہیں کر سکتی, تو تم کیسے. تو مجھے غصہ آیا, میں نے کہا نہیں, مجھے اگلا جنم ملا تبھی میں یہی کام کروں گی, اور میرے اندر صلاحیتیں ہیں تو مجھے کام ملے گا, ضرور ملے گا. لیکن ایک حد تک ان کی بات بھی ٹھیک تھی کہ مجھے آج محسوس ہوتا ہے کہ شاید دنیاوی طور پر میں اتنی کامیاب نہیں ہو سکی جتنی مجھ میں صلاحیتیں تھیں, جتنا ہونا چاہیے تھا. مجھے بہت بڑی اپرچونیٹیز اس وجہ سے نہیں ملی کہ میں نے ان ویلیوز پہ کمپرومائز نہیں کیا, میں نے اپنی ڈگنیٹی پر وہ نہیں کیا, سیکریفائز نہیں کیا ڈگنیٹی کو, تو اس وجہ سے مجھے آگے نہیں آنے دیا گیا. تو کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہمارے میڈیا کا ماحول آج بھی خواتین کے لیے اچھا نہیں ہے. آج بھی میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہی ہوں میری طرح کتنی خواتین جنگ کریں گی, کتنی کریں گی, نہیں کرتی جنگ. تو میڈیا کا جو ماحول ہے وہ ایسا ہے کہ وہ خواتین کو باعزت طریقے سے اوپر جانے نہیں دیتے. تو بہت مشکلات ہیں اس میں, لیکن چونکہ میرے اندر یہ آلریڈی تھا, اور پھر میں نے میڈیا میں آ کر کوئی شو پیس میں بننا نہیں چاہتی تھی. میں دراصل میرے فادر نے کہا اگر تم ڈاکٹر نہیں بننا چاہتی تو تم لیکچرر بن جاؤ, کالج میں پڑھانا شروع کر دو. میں نے کہا نہیں, میں اپنی آواز جو ہے نا وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہوں, ایک کلاس تک نہیں پہنچانا چاہتی. ابھی بھی میں ایک آر جے کے طور پر ایک ISPR کا چینل ہے, 2 دن وہاں شو کرتی ہوں. وہاں میں لوگوں کو موٹیویٹ ہی کر رہی ہوتی ہوں, ایجوکیٹ ہی کر رہی ہوتی ہوں. تو مقصد میرا وہی ہے جو ایک ٹیچر کا ہے, میڈیا پر میں وہی رول پلے کر رہی ہوں. ایسا نہیں ہے, یہ پختہ ذہن ہے جن کو مزید پختگی کی طرف لے جانے کی بات ہوتی ہے نا وہاں پہ. تو میں مطمئن ہوں کہ آپ کسی بھی شعبے میں رہتے ہوئے اگر اپنے فرائض انجام دے رہے ہو ایک اچھے انسان کے طور پر, تو آپ خدمت کر رہے ہوتے ہو. اچھا قدیر صاحبہ, آپ نثری بھی, آپ نے نثر پہ بھی کام کیا ہے, شاعری پہ بھی کام کیا ہے, تو ان دونوں میں سے اگر آپ کو ایک چیز کا ہو تو آپ کس چیز کے ساتھ جانا چاہیں گی؟ پوئٹری. مجھے نثر زیادہ پسند ہے. اچھا. کیونکہ نثر میں آپ کے پاس بات کرنے کا مارجن بہت زیادہ ہوتا ہے. شاعری میں کہیں نہ کہیں آپ قید کا شکار ہو جاتے ہیں. جی. لیکن آزاد نظم مجھے زیادہ پسند ہے اب غزل کی نسبت. کامیابی کس چیز کو کہتی ہیں؟ کامیابی جو ہے اس کی بھی ڈیفینیشن بہت ریلیونٹ ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو میرے نزدیک کامیابی ہو وہ آپ کے نزدیک بھی کامیابی ہو. آپ کی کامیابی کا معیار کوئی اور ہوگا, میرا اور ہوگا. اسی طرح آپ کی خوشی کا معیار کوئی اور ہوگا, میری خوشی کا معیار کوئی اور ہوگا. اگر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں, لوگوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ جب آپ مالی طور پر خوشحال ہو جاتے ہیں, آپ کے پاس کوئی بڑا عہدہ آ جاتا ہے, آپ کو شہرت مل جاتی ہے, تو آپ کامیاب ہیں. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, کامیابی کا تو معیار نہیں ہے. کامیابی کا معیار تو یہ ہے کہ آپ معاشرے میں اگر ایک باعزت مقام حاصل کر لیتے ہو اور آپ اندر سے پرسکون ہو, آپ کو سکون کی دولت حاصل ہے, تو آپ کامیاب ہو. تو کامیابی کی ڈیفینیشنز یہ ویری کرتی ہیں پرسن ٹو پرسن. خوش رہنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتے ہیں یا خود سے کر لیتی ہیں کچھ مینیج؟ دیکھیں, ہم لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ خوش رہیں. اگرچہ یہ لفظ بڑا آسان ہے, بھی خوش رہو. میں اسی ڈیپتھ میں, جیسے آپ فلسفی, جس طرح سے آپ کا بیک گراؤنڈ ہے نا, تو میں ہر سوال کے پیچھے کہیں نہ کہیں بہت اچھے سوال آپ کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو پھر یہ بات بتاؤں گی, میں یہ تمام فلسفی کو جانتے ہوئے میں یہ بھی جانتی ہوں کہ خوش رہنے سے انسان کی صحت اچھی رہتی ہے. اچھا کھانے پینے سے اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنا خوش رہنے سے صحت اچھی ہوتی ہے. لیکن میں بہت کم خوش رہتی ہوں. اب آپ حیران ہوں گے کہ میں لوگوں کو خوش رہنا سکھاتی ہوں.
میں لوگوں کو زیادہ تر بتا رہی ہوتی ہوں کہ خوش کیسے رہا جاتا ہے, خوش رہنا چاہیے آپ یہ. لیکن میں آپ کو پھر یہ بات کہوں گی کہ خوش رہنے کے لیے کسی نہ کسی وجہ کا ہونا بہرحال ضروری ہے, چاہے وہ وجہ بہت معمولی ہی کیوں نہ ہو. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی بھی وجہ نہیں ہے تو آپ کیسے خوش رہیں گے؟ آپ تو پھر پاگلوں کی طرح کہہ کے لگائیں گے جو بے معنی کھوکھلے ہوں گے. تو خوش رہنے کے لیے وجہ تلاش کریں. آپ سب سے پہلے آپ وجہ تلاش کریں. جب وہ وجہ آ جائے گی تو آپ خوش خود بخود ہو جائیں گے. پھر آپ کو انٹینشنلی نہیں خود کو مجبور کرنا پڑے گا خوش رہنے کے لیے. آپ کے پاس کوئی امید ہونی چاہیے. امید خوش رکھتی ہے انسان کو. پھر پریکٹیکلی جب آپ کچھ کر لیتے ہو تو آپ وہ خوش رہنا سیکھ جاتے ہو. میرا خوش رہنے نہ رہنے کی جو وجوہات ہیں, مطلب میرا ایک شعر ہے کہ بظاہر تو کوئی بھی غم نہیں ہے, بظاہر تو کوئی بھی غم نہیں ہے, مگر دل کی اداسی کم نہیں ہے. تو واہ واہ, آپ بڑی کنجوسی کر رہی ہیں ویسے شاعری سنانے میں. جیسی آپ کی شاعری ہے وہ سنانے میں آپ تھوڑی سی کر رہی ہیں, جتنا وزن ہے نا تو سچی بات ہے. ظاہر کتاب آ چکی ہے بالکل اسی وجہ سے. اچھا, تو اب یہ ہوتا ہے کہ میری بہت خواہش ہے, میں سمجھتی ہوں کہ پیس آف مائنڈ اینڈ ہیپینس یہ دولت ہے. جس کو یہ میسر آ جائے نا وہ کامیاب انسان ہے. جس کو سکون اور خوشی مل جائے, اور کیا چاہیے دنیا میں. آپ کے پاس بہت ساری دولت ہے, سکون نہیں ہے, رات کو آپ گولیاں کھا رہے ہیں, آپ ہر وقت پریشان رہتے تو پھر کیا فائدہ اس دولت یا اس کا. تو میں بھی خوش رہنا چاہتی ہوں, لیکن میری خوشی کے راستے میں چونکہ میں ہمیشہ سے ایمبیشس پرسن رہی ہوں, بلکہ اوور ایمبیشس کہیں, میں دنیا میں بہت کچھ کرنا چاہتی تھی. مطلب میں بہت محنتی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ میں یہ بھی کروں, میں یہ کام بھی کروں. ایٹ اے ٹائم میں بہت سے کام کرنا چاہتی تھی, لیکن مجھے وہ مواقع نہیں مل رہے تھے. مجھے اپنے معاشرے میں جب میں نکلی تو مجھے پتہ چلا کہ اس معاشرے میں تو ایک عورت کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہے. یہاں تو ہر مرد جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے عورت کو. تو وہاں میں جاتی تھی تو وہ میں نہیں کر پاتی تھی. تو پھر میں آ کر رویا کرتی تھی. بعض اوقات پی ٹی وی میں مجھ سے چلتے ہوئے پروگرام لے لیے جاتے تھے کہ بھئی یہ تو کسی کے ساتھ, پروڈیوسر کہتا تھا نہ یہ دوستی کرتی ہے, نہ فری ہوتی ہے, نہ ہمارے ساتھ کھانا کھانے جاتی ہے, ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے, چھوڑو اس سے, لو پروگرام کسی اور کو دو. تو مجھ سے پروگرام لے لیا اور میں گھر آ کے رویا کرتی تھی. اچھا, پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے لائیو شوز کی آفرز ہونے لگے, اور اس میں پیسے بھی زیادہ ملتے, کیونکہ اس وقت لائیو شو کرنے والی کوئی بھی کمپیئر نہیں تھی جو کہ ایکسٹمپور بول سکے. اور میں 10 گھنٹے اسٹیج پہ بولتی تھی, اور میں نے ایوارڈ سیریمنیز پاکستان کی جتنی بھی ہیں وہ کی ہوئی ہیں ہوسٹ, پاکستان کے تمام بڑے اخباروں کے اینول شوز کیے ہوئے, تمام بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے پروگرام کیے ہوئے, ملک سے باہر ایوارڈ سیریمنیز, سیمینار سب کچھ کر چکی ہوں. تو میں تھوڑا سا یہ دکھ بھول گئی. مجھے آن میرٹ, ظاہر ہے وہاں تو آپ کو سفارش پہ نہیں جا سکتے نا, ایک بندہ ہے انہیں چاہیے ایسا جو بول سکتا ہو, کئی گھنٹے بول سکتا ہو. تو وہ میں نے جو پیریڈ گزارا وہ بڑا خوشگوار تجربہ تھا, باہر کے ملکوں میں جانے کا, دنیا دیکھی میں نے. لیکن پھر جب میں آ گئی تو پھر وہی الیکٹرانک میڈیا ضرورت تھی, وہاں جانا تھا. لیکن وہ میں جب بھی جاتی تھی کوئی کہانی ہوتی تھی وہاں, اور میں پھر روتی آنسو بہاتی واپس آ جاتی تھی. اچھا, زندگی میں ویسے بھی دیکھیں, بھلے جنگل کا شیر ہو لیکن وہ بھی کوئی نہ کوئی جنگل میں ایسا درخت ضرور ڈھونڈتا ہے جس کے سائے میں بھی بیٹھتا ہے, جس کو پنجے بھی مارتا ہے, جس کے ساتھ اس کی انسیت ہو جاتی ہے. کوئی ایسا درخت ضرور ڈھونڈتا ہے جس کو وہ پنجے بھی مارتا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ سہلاتا بھی ہے خود کو. تو کوئی نہ کوئی شخص سے مراد میری کسی مرد سے نہیں ہے, کسی پرسنالٹی سے, جس سے آپ کی شیئرنگ اور کیئرنگ اس طرح سے ہو, جس کو آپ اپنا دکھ خوشی پہلے. ہاں بالکل, میں نے آپ کو پہلے بھی ابتدا میں بتایا کہ میرے 2-3 اچھے دوست ہیں, خاتون کوئی دوست نہیں ہے. میری بڑی خواہش رہی کہ کوئی خاتون میری دوست ہو, میری سہیلی ہو. جو سہیلی کا لفظ اپنے اندر بہت کچھ لیے ہوئے ہے, ایک آپس کا دکھ درد کا سانجھا رشتہ جسے کہتے ہیں وہ, لیکن نہیں مل سکی. پتہ نہیں خواتین سے جیلس کیوں ہو جاتی ہیں, مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا. تو مرد عورت کا ایک اچھا دوست بن سکتا ہے, میں آپ کو بتاؤں, لیکن اس کے لیے مرد کا بہت مضبوط ہونا ضروری ہے, کیونکہ مرد اگر عورت کو عورت سمجھ کے ملے گا نا تو پھر کچھ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. مرد اگر عورت کو ایک انسان سمجھ کر ملتا ہے تو وہ دوستی جو ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے. اور میرے چند ایک ایسے دوست ہیں جن کو میری مزاج کا بھی پتہ ہے, میری شخصیت کا بھی پتہ ہے. ہاں بس اتنا ہی کہہ لیں. نہیں, میں نے وہ آپ ہی کے ہاں بالکل,
ज़्यादा मुखलिस 2 ही हैं तो जो मेरे लिए मतलब खड़े भी हो सकते हैं, मेरी हर दुख सुख में मेरे साथ आ सकते हैं। तो वो मुझे औरत नहीं समझते, वो मुझे इंसान समझते हैं। वो कभी मुझे उस नज़र से नहीं देखेंगे जिस नज़र से एक मर्द औरत को देखता है। तो ये ताल्लुक़ दुनिया का सबसे मजबूत ताल्लुक़ है। जैसे आपने कहा कि आप आती हैं, उदासी को आप कैसे देखती हैं? बाज़ औक़ात कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इंसान के अपने, कुछ माहौल दे रहा होता है उसको। नहीं कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते। मैंने आपको बताया है कि उदास आप उस वक्त होते हो जब आपको वो सब कुछ वैसा नहीं मिल रहा होता जैसा आप देखना चाह रहे होते हो, माहौल वैसा नहीं होता, या वो काम आप नहीं कर पा रहे होते हो जो आप करना चाहते हो, या माशरे में ये जो मिजरीज बिखरी हुई हैं, या ये लोगों के हालात, एक सेंसिटिव आदमी वो देखकर भी उदास हो जाता है। तो उदासी अच्छी चीज़ है, दिल में दर्द का होना अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है उदासी। उदासी शायरों ने तो इसको एक पॉजिटिव चीज़ ही लिया है हमेशा। तो लोगों ने तो खुदा जी वो क्या, एक वो शेर था कि खुशी मिली तो हर एक दर्द मुझसे रूठ गया, खुदा दुआ करो कि मैं फिर से उदास हो जाऊं। वाह। खुशी मिली तो हर एक दर्द मुझसे रूठ गया, दुआ करो कि मैं फिर से उदास हो जाऊं। तो दर्द का होना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा, ये तो हमने आजकल सीखा है ना कोरोना में कि आइसोलेशन भी कोई चीज़ होती थी। नहीं, मैं तो हमेशा से तन्हाई पसंद हूँ। ये तो मैं तन्हाई का शिकार कभी नहीं हुई, तन्हाई पसंद हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने कमरे में बंद होकर कई दिन ना निकलूं, ये भी गलत बात है। किसी चीज़ की भी शिद्दत जो है वो ठीक नहीं होती। मैं ये चाहती हूँ कि मैं दिन में अपने काम करूं, जो मेरी ख्वाहिश है कि मैं दिन में, जैसे अब मैं एक रेडियो शो कर रही हूँ, उसके बाद मेरा एक टीवी शो हो वो मैं करूँ, थोड़ा सा मैं जाकर सोशल वर्क करूँ, कोई शख्स जिसे मेरी ज़रूरत है मैं उसके काम आऊँ, उसके लिए कुछ करूँ, उसकी मदद किसी तरह से भी, मैं जिस तरह से भी हो सकती है मैं कोशिश करती हूँ। उसके बाद जब मैं शाम को घर आऊँ तो मेरा जो कमरा है ना वो मुझे इस तरह अपनी आगोश में ले ले जैसे एक माँ अपने बच्चे को आगोश में ले लेती है, और मैं वहाँ बैठकर उस खामोश, एक मेहरबान खामोशी को एंजॉय करती हूँ, और वो सारी की सारी मेरे अंदर एक इत्मीनान और सुकून की लहर उतरती हुई महसूस होती है अपने उस कमरे में। वो कमरा जो है उससे मेरी उनसियत, मेरी अपनाइयत ऐसी है कि मैं दुनिया में कहीं भी चली जाऊँ तो वो मेरा कमरा मुझे याद आएगा कि मुझे अपने कमरे में जाना है। तो उसके बाद मैं वहाँ बैठकर क्या करती हूँ, वहाँ बैठकर आप किताब भी पढ़ सकते हो, आप मौसीकी भी सुन सकते हो, आप टीवी भी देख सकते हो, आप खाना भी इवन डाइनिंग टेबल पे ना खाना चाहो तो वहाँ लाकर खा सकते हो, आप सोशल मीडिया पर जा सकते हो, आप मोबाइल फ़ोन पर बैठ सकते हो। पूरी ज़िंदगी, पूरी दुनिया आपकी आप अपनी ज़ात में अंजुमन हो जाते हो तब। तो अच्छा, अब ये भी उसके बाद ये है कि आप वंस इन अ वीक और ट्वाइस आप अपने दोस्तों से मिलते हो, उनके साथ अपनी शेयर करते हो चीज़ें। अब म्यूज़िक का मुझे बहुत शौक़ है, म्यूज़िक इज़ माई पैशन, तो मैं थोड़ा गाती भी हूँ, तो प्रैक्टिस भी करती हूँ। तो वो आपको डिप्रेशन से निकालती है, इज़ अ थेरेपी, म्यूज़िक इज़ अ थेरेपी। तो वो हम मिलकर आपस में करते हैं, और अगर कहीं अच्छे लोग भी मिलते हैं दुनिया में उनसे भी मिलती हूँ। मैं कोई मर्दम बेजार इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं जिस तकरीब में होती हूँ लोग कहते हैं बहुत लाइवली है, लेकिन वो बात यह है कि अंदर से मैं तन्हा ही होती हूँ, बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ कि मैं पसंद करूँ कि मैं हर वक्त हजूम में रहूँ। थोड़ी सी देर के लिए हजूम में रहना चाहती हूँ, बाद में अपने कमरे में ही आना चाहती हूँ। इतना अच्छा वक्त गुजर गया, अभी ये एक जितना भी था 40, 45, 50 मिनट्स, ये कम था वक्त, मुझे पता नहीं चला, सच्ची बात है। हम क्या पैगाम होगा देखने वालों के लिए? देखने वालों के लिए मेरा यही पैगाम है कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। जब गुज़रती है तो बंदा समझता है ये तो एक पल में गुज़र गई। तो इस ज़िंदगी में कोई ना कोई अच्छा मकसद शामिल कीजिए, ऑनेस्ट रहिए, सिंसियर रहिए, और ज़िंदगी अपने लिए गुजारने के साथ साथ दूसरों के लिए भी गुजारना सीखिए। तो फिर जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो कोई आपको पछतावा नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, नो वर्ड्स। बहुत खुशी हुई आपसे मिल के, आपके बारे में जानते हुए मुझे बड़ी खुशी महसूस। अभी मुकम्मल कहाँ जाना है आपने? तो नहीं, जो भी पार्ट था, देखिए बासु का जब हम प्रोग्राम का प्रोमो बना रहे होते हैं ना, तो कुछ मोटी मोटी चीज़ें उसमें ऑन एयर कर रहे होते हैं प्रोमो में, लेकिन वो प्रोमो यकीनन उस एपिसोड का, उस प्रोग्राम का कहीं ना कोई इंट्रोडक्शन। मुझे भी खुशी हुई कि आपने मुझसे वही टिपिकल रवायती सवालात नहीं पूछे, इसलिए मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। जी दोस्तों, इन सां गॾु असांजो अॼोको प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान सजाद सुहाग खे ॾींदा इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला सुभाणे तव्हां सां थींदी मुलाक़ात, तेसीं ताईं सदाईं गॾु। अल्लाह ने